So, a very good morning to all of you for joining us on this Republic Day. We our team of SmartSync Services wish all of you a very happy Republic Day. And today is a day when it's Basant Panchami, and also in the eastern part of country it is called Saraswati Puja, right? So it's good that we are having this event on such an auspicious occasion, because Saraswati Puja is all about learning, all about knowledge, and Mission Smile is also in a way in that way only, right? And when I talk about Mission Smile, it's a platform, it's a community. And what do we mean by community? So in community, there is no one teacher. We all learn from each other, right? So we have had so many peers from our industry taking our sessions, and then we have some stalwarts of of the industry who have taken a lot of session. We have Mr. Atul Rawal, who has 30 years of experience in the microcap space. He is now taking session every month, and today. Our youngest member of the team, Dhruv Bajaj, he's going to take our session. But before I give the session or make the session open to him, I'll just give a bit of an introduction of what we do at Mission Smile, because a lot of new members would be joining. So just wanted to get an update from all of you. Can you see my screen? Okay, thanks, Dhruv. So once again, Mission Smile, people who have joined in for the first time or who have no idea about what Mission Smile is all about. Mission Smile is making new stock market investors learn it through engaging research, right? And on this 26th January, we have got a unique offer for only members who have been, how do I put it, who have joined in today only, and who are the attendees for today's session and not a Mission Smile member yet. You can avail our Mission Smile membership on a 26% discount. Okay. In some time, I'll share the link also. So just give you a brief overview of what Mission Smile is all about. So as you can see on your screen now, if you become a member today, you get an access of 1 year of all Mission Smile content. And what do we have in Mission Smile? We have Triple SK Pathshala 4 sessions. So I wanted to spend some time on Triple SK Pathshala because this was started way back a year ago. But for some reason, we did not continue after the first 4 sessions. But with now Dhruv being available with us, we are soon going to have more such sessions also, so that new investors can also understand how to do research. We'll have sessions like how to read annual reports, how to do deep dive. So all those things will be taken by Dhruv in due course. Then we have had investing Carva sessions. We have had 15 deep dive research reports, 22 Mission Smile webinars. In fact, 23rd Mission Smile webinar most probably will be having this Sunday itself, and we'll discuss about Indian Energy Exchange. So that is a company which has been in the news in the last 2 years, and this Sunday we'll be covering that. We have had 9 guest webinars as well, as you can see, right? And guest webinars and investing Carva sessions are free for all, but all the other research content are only available for Mission Smile members, right? And as you can see, if you become a member today, these are the things which you can get access of. Today, as we are going to have a discussion on small cap companies from 100 crore to 2,500 crore. We had one session on 25th of December where we launched our 100 small cap companies, and with that we also released 20 research reports on these 100 companies, right? So there were 20 research reports were released on 25th December, and we'll again release 20 more research reports after today's webinar. But before doing that, Dhruv will take us to
deep dive into two specific companies, right? So as you can see here, what all we have been doing: 12 Mission Smile webinars, 9 guest webinars, 8 investing Karwa. These all companies we have covered till now on part of Mission Smile webinars. So over here, as you can see, it is not just SmartSync Services research team or myself or Dhruv who would be presenting, but we also have Mission Smile members like Dhruv Ravani and Avdut Joshi. They have also come up and have taken a couple of sessions. So again, I'll bring in the point of community. In community, we all are students, and anybody and everybody can be a teacher, right? And we are all learners, right? These are the guest webinars you can see. These are the investing Karwa sessions. Triple SK Pathshala, as I mentioned at the start, we stopped after 4 sessions, but we are soon going to start with chapter 5. And now Dhruv will be taking charge of those sessions, right? These are the 100 small cap companies, which based on our screening we came up with. We discussed about the screening process in our last meeting, and that sessions recording is available on the YouTube and also on our Mission Smile platform. It's freely available, so you can go and check that anytime. So as you can see, 1 to 100, there are 100 companies name over here. So we covered the 20 names in the first, or we released the first 20 reports in the last session. And today after this session, we'll be releasing the 20 reports. So from, as you can see, Crane Crux Enterprise to Raghav Product. So these 20 names we'll be covering after today's webinar. And in today's webinar, Dhruv will be taking part of or doing deep dive on 2 companies. So over here, you can see we have done a screening process and we have tried to rank these companies based on 8 factors. There are one bottom up, as in there are 4 bottom up filters and 4 top down filters. And the inspiration for this has been Ian Castle, because in one of his interviews, he mentioned about the things or the 8 attributes he basically looks at whenever he invests in micro cap businesses, right? So based on that, we have given a ranking of to all these companies, right? So with this, I think now I'll stop sharing, and Dhruv, you can start the Sure. Yeah. Excuse me. Yeah, you can just share your screen and see if it's working. Is it visible? Yeah. Sure. Still good. You can just make it full screen. Yeah. I'm muting myself, Dhruv, so that you can now take over. Sure. Great. Thank you. Excuse me. Yeah. So good evening, good morning, everyone. I'm Dhruv Bajaj and I'm currently 20 years old. So the idea behind choosing these 2 companies was not that these companies are excellent operators as such, but to show that there are not just one way to screen companies. So like we have given you a primer of 100 companies based on a screener. So what we are trying to tell you is that these are not just 100 small cap companies available in our universe which are investable. There are several other companies as well which are either turning around or due to some intricacies of screener. Say for example, I will talk about a company wherein it got demerged recently. So there is not much data available in the screener website, because of which it is not the part of a screener, or what should I say, our screening process. But that company is decent. So the idea was to find other companies which are not part of a 100 small cap list. So these are the companies. So before I start my presentation, I would just like to ask you, based on the returns that you are seeing, will you invest in this company? If I am someone who is just seeing this company for the first time, I will see ki
last 20 years में it has underperformed the market by whooping 1600%. And कोई अगर वॉरेन बफेट के पढ़ता होगा एनुअल रिपोर्ट तो ही विल इमीडिएटली क्लिक कि ही इज ट्राइंग टू प्रेजेंट हिज एनुअल रिपोर्ट्स लाइक वॉरेन बफेट. So he follows a similar format. However, there is one major difference. He outperforms the market while he has significantly underperformed. Excuse me. So the question would be, why am I choosing this company to present? So there are several reasons which I will talk about later. So basically the company's name is Revathi Equipments. It is headed by Abhishek Dalmia. And those of you who don't know about Abhishek Dalmia, he's a stalwart investor who was also part of Masterclass with Super Investors. So he had a whole chapter dedicated to him and how he invests in small cap companies, turnaround stories, and all such things. So basically about Revathi. Revathi is primarily a drilling equipment companies, which supplies its equipments to companies like Coal India and Tata Steel. So as you can see, it is a very cyclical types of company because its end users are also primarily cyclical companies like Coal India. And it has two parts. First is Revathi Equipments, its drilling equipment part, and secondly, it's Seismic CIMAC Consultants Limited. So what it does is, it is primarily involved in architecture, design, and other related services. So primarily your project management consultancy and all such things CIMAC provides. So as you can see, these are the two primary segments. So these are completely unrelated segments. Drilling equipment is more capital intensive versus CIMAC, which is a more manpower intensive business. Yeah. So as I've told you in the past as well, its last 2 year record has been terrible. Last 2 decade record has been very terrible. So firstly, there was a promoter change in around 2010, wherein Abhishek Dalmia took control of this company. So everyone thought that fortunes will change because he's a very good investor. And during that time, there was a capex boom during 2008 period. But suddenly after the crash, everything fell out of place. So its drilling equipment industry or its segment was worst hit because of this thing. And primarily, one funny thing about this business was, just like Warren Buffett, this business is roughly 40% of total business income was coming from investments. And these investments were mainly in real estate and all such things, which after 2008 fell. So secondly, yeah, lost decade. It has done nothing in the past 10 years except cleaning its balance sheet and figuring out things how to do it well. So if you will go to Screener website, you will see कि जो इसका FY10 में सेल्स फिगर था वो अब जाके FY22 में आया है. So as you can see, 12 years में सेल्स खाली वापस वो पीक तक पहुंचने में हमको 12 years लग गए. एंड अभी करेंटली डेट फ्री है तो दैट इज अ गुड थिंग. बट अगेन आई वुड कॉल दिस अ वेरी गुड कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी. And thirdly, potential CMAC. So as I talked about CMAC Consultants, this was a company that was acquired by Abhishek Dalmia around 2010 time only. So his idea was कि consultancy में आगे काफी growth आने वाला है because real estate is booming. So but he tried to do a smart thing. कि drilling equipment business he will sell to someone, a potential buyer who is giving him a fair price, and from that money he will buy potential CMAC. But post 2010 or post 2008 itself, the drilling equipment sector went into a major downturn. So the potential buyer immediately revoked his offer. So funny thing was he had already given an offer for potential CMAC. So he bought this potential CMAC company, which he thought he will buy from the money that he gains from sale of Revathi equipments. But the sale didn't happen and potential CMAC was ultimately acquired. So he had to take major debt to acquire this company, which led to a major burden on its balance sheet. So you will be surprised to know that it took him close to 10 years to just clean up that debt part. And potential CMAC turned its first profit in the last year. Or rather, it only turned meager profits in FY16 and 17. But in past 10 years, it had only 2 years of profitable years. So that, so if one So firstly he thought कि demand बहुत आ रही है आगे business में. So what he thought कि instead of
making products after getting orders. We should focus the demand and make products immediately so that we can boost our top line. So he tried doing that, but the demand didn't came. So he had to take major losses in inventory. So due to that thing, 1 year was very bad. Then as I said, CPAC performed very poorly. So why did this business perform poorly? And what were the reasons behind it? So as I said, CMAC is primarily a manpower intensive business. So but the thing was, the person who sold this company to Revathi Equipments, he immediately post sale started his own competing company despite having a non-competing clause. And Abhishek Dalmia, based on his uh, lawyers, decided that we can't file a complaint against this company. So because of that, they had to compete with the company, or rather the principals who have sold the company to Revathi Equipments. And since this was a manpower intensive business, so it doesn't care how well it was performing in the past 10 years. It is the principal or the people who are running that business that is key in this business. And since all the major people left this business suffered badly. So about CMAC, you will be surprised to know that in the past 10 years, CMAC has more than 3 CEOs. And each CEO left the company before 2 years itself. And currently, Abhishek Dalmat took helms of this business. But one will realize that if in a manpower intensive business, the principal itself or the CEO itself is leaving the company in every 2 years, so how will this business succeed? So because of that, Revathi had, or rather, CMAC had very poor results for the past decade. Thirdly, investments in Mumbai real estate. So as I talked about, during FY10, he had made several investments in real estate projects. So he thought कि आगे मुंबई में स्पेशली डिमांड काफी आने वाली है. So because of that, he invested in one project wherein he invested close to 20 to 25 crores. And even now, he is unable to get back his investment back. So he has tried several times to exit his stake, which is currently worth around 17 crores. But despite his several efforts, he has been unable to sell that stake. And he doesn't want to do a stress sale, wherein he will sell the uh, real estate property at a very low price. So he's waiting for the right time or the right buyer. But that has been a major negative point so far. And thirdly, as I talked about, write down of inventory assets and bad debt. So they've written out close to 100 crores of bad debt, inventory, and all such things in the last 10 years. So that isn't a very good thing. Then they made several other investments in companies like Stellar and all such things. And Stellar was a close associate of Caterpillar, which is a major company in oil industry. But despite several efforts and several other joint ventures that it did with decent companies, but ultimately since the industry was going through a very tough phase, so the investments didn't materialize. So he had to sell them at losses. As I told you, they have close to 3 to 4 CEOs in the past 10 years itself. So that is not a very good sign or a very healthy sign for the company, which is whose one part is very manpower intensive. Then in a bid to expand their projects, so this is a very funny thing. So in uh, FY 12 or 13 annual report, he mentioned that Qatar has won the rights for FIFA World Cup, which took place in this year. So he felt that because of this, the Qatar will go into a very expansion freeze, wherein they will do a lot of capex in the country so as to make it ready for FIFA World Cup. So he thought that demand will come in that country, and just based on that factor, he made several investment and opened several offices. So he sold those investments or rather the offices in FY21. Suppose that he doesn't have any major exposure in outside India, and yeah, he also tried selling his drilling equipment products in several other geographies as well, like Africa and North American side, but it didn't work out. He used to get orders, he used to sell products, but still he wouldn't be able to get margins that he needed to run this business successfully. And yeah, so basically these are 6 to 7 points which brought downfall into the company for the past 1 decade. So currently everything seems very negative. So what changed? Yeah. So firstly, Abhishek Dalmia, the CEO of Revathi Equipments,
who was previously the managing director. So currently he is not only the CEO of Revathi Equipments, which he took him in around FY19. But recently, in recent annual report, he also mentioned that he has become the CEO of Sima Consultants, and it also turned profit in the current annual year. So I am very bullish on that he has shown a very good cost rationalization measure. So what do I mean by that? As I've told you that in the past 10 years, it has been unable to achieve its peak revenue of 2010. So in FY22, it achieved that feat. But post FY16-17, it was incurring major losses in its entire business, in drilling business also. So he took control in FY19 and his sole focus was कि मुझे अपना business downsize करना है. So he took major measures like sell his poor investments in offices like Qatar and all such things. Then stop exports into geographies wherein they were not earning major profits. And even in CMEC business, he thought ki, like they were doing project management consultancy for major companies and major schools like IIT or major institutions like IIT, IIM, then Ashoka University. So he stated, although they were very profitable, but catering to that type of companies was not very focused approach for this type of business. So despite their profitability, he completely forfeited that type of business. So that showed कि he is willing to take short-term pain for long-term gain. So because of this focused approach, I started looking at this company. So just talking about this point. So currently he split the business into three parts. He thought कि ठीक है हमने balance sheet clean कर ली है. Like they've completely zeroed down on their debt part that he took in FY10 to acquire CMEC. So currently they are net debt free. And in fact, they have treasury of close to 48 crores. So they have cash of close to 50 crores in their balance sheet. So that is a very good thing. So as I have said, they've cleaned their balance sheet. And so now currently their focus is to focus on the top line. So it took them close to 10 years to just clean their balance sheet. So now they are focused on growth part. And good thing is that in FY, sorry, in FY22, they locked their peak order book. So currently they have an order book of close to 200 crores. And the market cap itself is close to 350 crores. So although this order book doesn't sound very impressive, but based on the past decade, it is very impressive. And they are expecting to log their highest profits in FY23. And he expects that this order book of 200 crores is not temporary orders. He will keep on getting this order. So now we will see what happens later, but that's what attracting me towards this business. So as I said, he split the business into three focused areas, that is domestic, CMEC, and exports. So because of that, he has appointed several heads for each of these businesses. And he expects कि आगे, although their exports in the past were not successful, he's expecting कि this time it will be successful. And we are seeing some good, what should I say, green shoots in that part as well. So recently they have diversified from just coal-based plants into limestone drilling equipment as well. So what are limestone drilling equipments? Basically, these are used by cement producers. So early they had only exposure to steel and coal sector, but now they have exposure to cement industry as well. So they got a very big order from a very big cement manufacturer in Africa, which is an export order. So they are very bullish on that part, and they believe that due to this diversification from just coals to cement and steel as well, that will boost the top line. Currently coupled with de-risking their revenue profile. So instead of being dependent on solely coal India, they can diversify their revenue line. So that's it. Split and focus. Secondly, scaling back. So in past 5 years, if there is one good thing that I've observed in Abhishek Dalmia, then it is that instead of focusing on top line, which he has done for the past 1 decade, he has started focusing on the bottom line. So he didn't mind closing his investment, writing down its inventory and bad debt, but he wanted to turn profits. And he has showed that he has been able to sustainably generate profits for the past 4 to 5 years. So that is a very good thing that I've observed in this. And see, mistakes are made by humans only. And he has been doing this business for more than a decade now. So obviously he learned from his mistakes and at least he has started focusing on bottom line recently. So that is a very good thing.
So I'm not saying that he's a very good capital allocator as such, or his past record is very good. But since FY19, I'm seeing that he has improved a lot as an operator by focusing on bottom line versus top line. Then yeah, he has cleaned his balance sheet. He has upgraded his business model. Yeah. So what they used to do primarily was just supply equipments to Coal India and all such other companies. But currently they observe that since selling equipments is a very one-time type of revenue thing. So if Coal India will do capex, then they will get revenue. So instead of that, they can build an operational and maintenance type of model or a service model wherein they can get recurring revenue stream. So their revenue profile will not be very volatile or lumpy. It will be more stable. So he's focusing on that part, and there are some green shoots visible, but it will take some time for that to materialize. So that is one major development taking place. And yeah, as I said, he's diversifying from just Coal India to cement producers as well. So that is one good thing that I'm observing. And last but not least, one major offshoot which I'm seeing currently is that since CIMEC, which just turned profit in current year, he is thinking that although we have invested close to 120 crores in that type of business, and due to our poor allocation decisions and what should I say, very volatile top management type of structure because of 3 to 4 Cs in past decade, CMEC was unable to perform well. But now he is focused कि इसमें profit आएगा. And since we have invested close to 120 crores in this business, we have cash of 50 crores. We have investment in real estate in Bombay, which has historical cost of 20 crores. And still market is valuing us at 350 crores, which was their valuation close to 5 to 6 years back. So in spite of paying debts and all such things, their valuation is still that. So they feel कि अगर हम demerger करेंगे, तो Revathi equipments, the drilling business itself will command this type of valuation. So there is huge scope for valuation re-rating in future, which I will talk about later. So Dhruv, I think Amandeep has a few questions. I think we can take a break here for his Sure. questions. And you are doing an excellent job. You just keep some water Yeah, sure. beside you so that, and you don't have to say sorry all the time. Don't worry. Okay. So Amandeep, I'll just unmute you. You can ask your question now. Yeah, unmuted you, Amandeep. You can ask your question. Hey, hi Dhruv, amazing work even when you are sore throat. So a few questions. I also went through the information that I could find before this presentation. So even his AR, it is mentioned it's debt free, but when I looked at balance sheet, cash flow, and all these statement, I still find around 32 crore of debt Right. uh, there, and the cash is somewhere, if I count all liquid investment, it's around 54. So yes, looks like net cash positive, but in his balance, in the annual statement, he mentioned something like 130 crore cash. So were you able to match that figure somehow? Because I was able to just, when I counted everything, it was 52 crore, but somehow he mentioned 130 crore of net cash. So that is one part, and I know you, it's difficult to get the answer of this right now, but maybe you can check later on also. That is one. Second, so the first question is basically to validate whether this 130 crore net cash exists or not. Sure. Second thing is order book. Now, order book of 200 CR, this is all from consultancy. And the consultancy, the best margins, best operating margins so far have been like 2%. So will that move any needle in terms of bottom line? Or do we have any evidence that these contracts are at better operating margin than before, right? Because there are a lot of architectures, lot of such consultant out there, and if so far they have not been able to command higher operating margin, so maybe because of competition and there is less competitive advantage, they might have won a lot of these orders, but I don't. Do we have any evidence that these orders are having some greater margin than 2-3% operating margin, something like that, right? And uh, you can take this question, and Yeah, sure. maybe, and then So then I have two more. Yeah. sure. So taking a first question, so the basically their long-term debt is currently Mm-hmm. nil.
So they have taken working capital loans of 32 crores, and that too Hmm. because they had to do an, so basically during FY20 they were doing an export to Africa, but due Hmm. to the supply chain issues they were unable to export that thing. So they took on major debt just to finance that sale. So, but since COVID came, so they had to service that debt, and because of that, their interest cost and all such thing uh, increased a lot. If you will see that finance cost recently, they have again stabilized to 3 to 4 crores, and that 32 crores debt that you are talking about, it is not long-term debt as such. It is more on working capital side. Okay. Yeah, and secondly, your net cash wala position. So he clearly mentioned that we have 48 crores of treasury. We have Hmm. invested 120 crores in that business, CMAC business, and Okay. we have That's paid how out he's debt. counting it. So Okay. basically what he was saying that we have paid close to 190 crores in past 1 decade in paying off all this debt, inventory write down and all such thing. So I don't think he ever Hmm. mentioned कि 150 crore का net cash या ऐसा कुछ है. Okay. Maybe And I misread then. Yeah. yeah, and secondly order book भी he never mentioned कि CMAC का ये order book है. एक He बार आप clearly चेक stated कर कि लेना, नहीं आप नहीं. चेक कर लेना, हाँ. Okay, sure, sure. If I remember correctly, then he said कि total business का order book की 200 crores का है. He mentioned about some new guy he has hired. I forgot the name of, he's has been hired as chief operating officer, and after that, this new guy in CMAC business has been able to get this kind of order book. So that's what I read, but maybe I could be wrong. You can check. Okay. Other thing, I have a few other observations. So limestone, they are going to limestone drilling equipment. This is different from what they do. They have been doing currently. Uh, I don't know whether they have the technology or how different it is from the current technology, because they have done similar kind of things in the past. They ventured, as you would have read, they ventured into construction equipment business a few years back, invested a lot of money. They had to wrote all this off. So they, yeah. So do we have any evidence whether they have some, like, they have the technical capability to do this kind of a business? So basically, what evidence I'm looking for is, are they getting any major orders from a very good company? So like they are saying कि cement producer जो Hmm. अफ्रीका का top producer है वो हमको order दे रहा है. So I'm trusting Hmm. on that part. So I clearly don't know कि if they are that capability or not, but I Okay. think the drilling equipments must be similar in both the industries. Again, I'm not sure about the drilling equipment part. But and Yeah. yeah, Some. sorry, uh, thanks for reminding me. I forgot to mention about that construction equipment wala part. So I would have that in slide, but I forgot to tell about that. So No, what they you did don't was have to say sorry. Yeah. no issues. या मतलब याद आ गया अच्छा आपने बोल दिया तो सबको बेनिफिट होगा ऐसा. Yeah, just two more things. So, Yeah, sure, sure. cement order that he talked, cement, the drilling order from some African country. Do we know which country it is? I will tell you why. Um, He's there not are a lot of mentioned company. that actually in, yeah, so I'm not Oh, sure about that. okay, so what I have read from other companies and also in my personal capacity, I've seen it is able. People are able to get business in Africa. The biggest part is the getting the money back. Right. Because most of these countries, the USD is a big problem, right? Hmm. And the working capital gets stretched. Be it Hester is one of the businesses, but there are a lot of businesses that I know of who have had to write off their investment in Africa, or the money never came or got delayed. So if we know which country it is from, then at least we can, from the credit profile of this country, we could make some kind of judgment whether this money will come back or not, right? So So you you said already it said very we, right. yeah. Because he had actually exported in Africa during FY 13-14 times. So he had to completely write down that part. So you're very correct that part कि अफ्रीका से पैसा ही नहीं आता. So again, Hmm. what I'm betting on is इनने last 10 साल में इतनी गलतियां कर ली कि he must have learned something from his mistakes. So I'm thinking कि फिर से अभी अफ्रीका में जाके वेंचर कर रहे हैं and this time he has taken an order from a renowned company. Again, उन्होंने name नहीं mention करा maybe due to some contractual issues, but he said कि इस टाइम फिर से ये अफ्रीका में गए हैं तो आई एम होपिंग कि ही मस्ट हैव लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक इन FY 13-14 and this time the credit profile of at least the buyer, that Mhm. cement producer, must be good. Yeah. So again So I what don't like. happens in,
Yeah, if we can get the name of the country somehow, that would be great. Because I'll tell you one more thing. Even if the company is extremely sound, the government don't have USD. So they have to ultimately depend on the government to arrange this USD. So that's why I'm saying the country name helps, because the company might be producing a lot of money there locally, but it's difficult to arrange the USDs, right? And one thing I noted was the in the drilling business, the operating margins are really high, like 20%. So this seems to be good ROCE business, small market, and they have been a niche player, maybe that's why. If we have some kind of evidence that they have got some major orders from Coal India or some others in their existing business, I think that could bring in cash. Uh, so I mean, in this 200 crore order book, I hope I'm wrong. So if some of the business has come from Coal India or somewhere, that could be extremely cash lucrative for this accrual for this business. Let me know if you have some evidence of that. They have actually not mentioned. So yeah, about that good ROC part, I have just mentioned here as well. कि core drilling business में जो company है, they are historically updated on that later in the strengths part. So I've actually covered that part, so maybe that will answer your questions. And Africa वाला part में again they are not mentioning any such thing कि कौन सा producer है या फिर कौन सी country में, but yeah we can Yeah. mail them and see if they reply on that part. Yeah. But yeah, ideally I don't know कि कंट्री सही है नहीं, और इनने पास्ट में सेम मिस्टेक करी है बिकॉज ये पास्ट में भी एक्सपोर्ट करने गए थे एंड पास्ट में डिडंट वर्क. एंड सीमेक में जैसे आप यू आर टेलिंग कि 2% मार्जिन ही है, इनके Hmm. 2% Yeah. मार्जिन भी नहीं आ रहे थे पास्ट काफी साल से. I इट mean, वाज two मेकिंग two is हेवी best. लॉसेस. Yeah, two is like best margin they have been Yeah, able to get in the last few years. राइट. बट वन थिंग दैट आई एम करेंटली बेटिंग ऑन इज, इसमें ना इनका बेचारा प्रॉब्लम बहुत आता है सीमेक में. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि they used to hire some principal कि he will lead the business, but they saw कि ये principal business start कर लेते then अपना competing business start कर देते एकदम से. and वो principal का रोल अच्छा रहता है तो उनके नीचे कोई ना, जो उनके जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाते कि वो आगे सीनियर का रोल ले पाए. सो ही सॉ दिस प्रॉब्लम. तो उन्हें क्या करेंगे, अपना पूरा ऑपरेशनल मॉडल ही चेंज कर दिया, जिससे कि ना हर पर्टिकुलर सपोज फाइनेंस का अलग, मैनेजमेंट का अलग, ऑपरेशंस का अलग, हर चीज का अलग अलग डिवीजन हेड बना दिया, जिससे कि इनका एम्प्लॉय की ना आगे टॉप मैनेजमेंट में जा पाए. सो दे कुड डेवलप देयर एम्प्लॉयज वेल. सो द प्रॉब्लम विद दिस वाज कि जो इनके प्रिंसिपल्स थे दे गॉट एंग्री कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, हम इतने टॉप लाइन पे थे, हम टॉप पोजीशन में थे, तो आप किसी को भी थोड़ा डिमोट करोगे तो उनको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा. तो दे स्टार्टेड लीविंग दैट बिजनेस एज वेल. सो ही न्यू कि शॉर्ट टर्म पेन तो आएगा इस बिजनेस में. तो सीमैक ने इसलिए 2-3 इयर्स बहुत गंदा परफॉर्मेंस दिया भी था, बट ही थॉट कि ये शॉर्ट टर्म की वजह से एंडिंग में इनका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा ना वो इंप्रूव हो जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दैट सीमैक ने पहले लॉसेस करे थे, एंड इन FY 22 ही ऑब्जर्व किया यार मैं जिसको भी ला रहा हूँ हर 2-3 साल बाद निकले जा रहा है. तो ही करेंटली इज द CEO ऑफ सीमैक. सो आई एम बेटिंग ऑन हिम. एंड प्लस जैसे डीमर्जर आएगा, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डीमर्जर पार्ट लेटर. सो व्हेन सीमैक itself get demerged in a separate entity, so he will have to answer about his performance for CMAC alone. So I personally believe कि जैसे डीमर्जर आएगा, सेपरेट कंपनी होगी, तो he will have more focus on the bottom line in CMAC business, because मार्केट को आंसर देना पड़ेगा. आपकी खाली एक स्टैंड अलोन एंटिटी को अगर आपको रिपोर्ट करना है मार्केट को, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, वरना वैल्यूएशन ही आपकी क्रैश हो जाएगी. तो बेस्ड ऑन दैट आई एम होपफुल कि बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स विल बी अलाइंड कि ये आगे परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, एंड ही इज करंटली द CEO ऑफ सीमेक. सो आई एम होपिंग कि उधर भी टर्न अराउंड आएगा. एंड अभी साइंस दिखने लगे, इनके लास्ट ईयर प्रॉफिट्स आए ऐसे सीमेक में, ऑल्दो दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द पेंट अप डिमांड दैट कोविड कुडंट फैक्टर इन. सो बिकॉज ऑफ दैट एज वेल सीमेक टर्न प्रॉफिट्स, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे कैसे प्रॉफिट करते हैं. बट इंसेंटिव्स आर अलाइंड बिकॉज सेपरेट कंपनी होगी तो इनको मार्केट को आंसर देना पड़ेगा. So because of that focus, they will have to turn good profits. Yeah, so So I'm maybe just looking at that part. so maybe I think that two big driver for the turnaround that we could look at is, one is demerger, second is the kind of business that they can get from the high ROC division, which is the drilling division. But we need to monitor So it on, we need to track it on quarter by quarter basis. right. So basically, what were the two triggers that forced me to study about this company? Because this is probably the first or the second company that I've seen ki turnaround
हो रहा है या टर्न अराउंड स्टोरी है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ एक्चुअली. सो दिस इज अ वेरी न्यू थिंग एंड आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस. सो आई एम नॉट सेइंग कि इसमें इन्वेस्ट करें ना, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो कि देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज टू स्क्रीन अबाउट आइडियाज. इट इज नॉट जस्ट कि आप स्क्रीनर में ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाला लगा लो कि last 10 years में 15% CAGR of sales and profit and all such things. There are several other ways as well. So the two key triggers in this business are demerger and for me it is management change. Because I am hoping कि इनने 10 years में इतनी mistakes करी है अभी इनने last 5 years में changes दिखाए ऐसे कि bottom line में focus कर रहे हैं. So maybe these two factors can trigger value re-rating. So I think I should go back into the slides and उसमें काफी question answer हो जाएंगे. So Ankit ji, can I go back? Aman, I think all your questions have been answered now. Oh, maybe he's muted. Okay, great. Yeah. Thank you. Thanks, Aman. So thanks, Dhruv, for answering all those questions. And you can now go ahead. No Sure. problem. So going to that part कि drilling equipments is very profitable. So as one can see कि historically भी drilling business ने ROE 20% का generate करा है. So it is not कि बहुत ज़्यादा cyclical है, वैसा है कि जब भी इन्हें sales करी है अच्छी तो they have generated good profits in drilling business. Why I am saying कि sales करी है अगर we will discuss about that later, but basically drilling business is not that bad. So these are not some positives that I am talking about, but some pointers कि इन्हें last 2 decades में इतना गंदा performance दिया, but there are some things that one should know about this business. So इनका post FY19 प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टेबलाइज्ड अगर आप लो ना इनके वो राइट ऑफ से हटाने के बाद भी तो 16 करोड़ का इनका स्टेबलाइज्ड प्रॉफिट आ रहा है सर. स्टेबल रेगुलर प्रॉफिट्स आ रहे हैं 16 करोड़ के. एंड इन ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स बिजनेस दे हैव मोर देन 50% मार्केट शेयर in drilling equipment business. And इनका business जो है that is they cater to primarily coal India. It is their major biggest client. So what their business does is suppose coal India makes a tender. So because there are only 2 to 3 players in this industry, so they do still have a little bit of pricing power. So do I mean by that? They are still able to maintain good margins because player in the market में. And these are critical equipments which coal India require. सो इनका 50% मार्केट शेयर है एंड इनका टेंडर ऐसा होता है कि दे इमीडिएटली गेट 50 to 60% बिजनेस whenever coal India does any tender. So if coal India expands, then it is rest assured कि इनको 50 to 60% बिजनेस तो मिलने ही वाला है coal India का. So that is why good thing that CIMEC also became profitable in FY22, which I have been telling for so long. And yeah, they have achieved their highest order book of 200 crores. And yeah, as I said कि ड्रिलिंग बिजनेस में इनका जो अगर सेल आएगी तो रेवेन्यू इनका अच्छा आना ही है बिजनेस में. बाय सेल आई मीन कि अगर कोल इंडिया केपेक्स करेगा तो इनको आएगा पैसा क्योंकि प्लेयर्स ही कम है और इनका 50 से ज्यादा मार्केट शेयर है. बट द नेगेटिव्स, सो नेगेटिव्स अभी भी काफी सारे. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ वेरी क्लीन स्टोरी. सो फर्स्टली दिस इज अ वेरी हाईली सिक्लिकल बिजनेस. वाई सिक्लिकल? बिकॉज इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट कि कोल इंडिया ग्रो होगा, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट कि कोल इंडिया आगे केपेक्स करेगा. सो सपोज कोल इंडिया की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आर वर्किंग वेल, वो उसमें कैपेसिटी ढंग का यूटिलाइजेशन करके दे आर एबल टू क्लॉक हायर रेवेन्यूज. बट दैट वोंट मीन कि रिवाती मेक प्रॉफिट्स because Revathi get profits if Coal India does any capex by supplying equipments for that part. So during FY18, if I remember correctly, they reported massive erosion in revenue from Coal India. So suppose unke revenues were close to 120 crores, they immediately fell back to 44 crores. So one will ask कि एकदम से इतना 70-80% ड्रॉप आया कहाँ से? So basically in that year, Coal India ने कोई major capex नहीं करा था. So that was probably the first year in past 2 decades where they didn't get any orders from Coal India. So because of that, the revenue profile was completely गिरी गई थी मतलब एकदम. तो that is a major risk. And इनका second customer है टाटा स्टील. That is also a very cyclical company. Then अभी जो एक नया customer ला रहे हैं in cement industry, that is also very capex driven business. So वो लोग capex करेंगे तो इनका order आएगा. So that part is very risky. So that is why I'm saying कि आगे capex boom आएगा ऐसा सब expect कर रहे हैं. And those who are tracking cement companies, they would know कि अभी कोल का इतना एब्सेंस है मार्केट में कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है सीमेंट कंपनीज को ऑपरेट करने में ही, लेट एंड ऑल मेक गुड प्रॉफिट्स. तो आई बिलीव कि आगे कोल, आई हैव अगेन नॉट स्टडीड कोल इंडिया थॉरली, बट आई बिलीव कि आगे इनके केपेक्स प्लान आने वाले हैं बिकॉज मार्केट में बहुत डिमांड का इशू आ रहा है कोल का पर्टिकुलरली फॉर पावर.
सेकेंड इज टेंडर बेस्ड रेवेन्यूज है, तो एज आई सेड कि टेंडर बेस्ड आते हैं, तो अगर कोल इंडिया टेंडर देगा तो इनका रेवेन्यू आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आया। तो दैट इज अ वेरी बिग रिस्क कंपोनेंट इन दिस बिजनेस, यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल इज अगेन वेरी ह्यूज। सो एज ही सेड कि 32 करोड़ का डेट कहाँ से है, तो इनको वर्किंग कैपिटल साइकिल अपनी वो मतलब उसमें स्पेंड करने के लिए इनके 30 करोड़ का डेट लग जाता है वर्किंग कैपिटल का। एंड सपोज दे हैव प्रोड्यूस समथिंग इन एडवांस बाय फोरकास्टिंग सम डिमांड एंड डिमांड डजंट कम, तो इनने जो लोन लेके रखा है फॉर मेकिंग दैट इक्विपमेंट्स, लोन तो रहेगा ही, तो उसका इनको फाइनेंस कॉस्ट काफी हाई आएगा। सो दैट इज वन मेजर रिस्क एज वेल। देन इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं, स्टील, एंगल, रॉड्स, इनके भी वॉलिटिलिटी काफी होती है, बिकॉज अगेन स्टील है नाम में, तो उसके कमोडिटी है, तो बहुत प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, तो उसके वजह से भी इनके मार्जिन में काफी इफेक्ट आता है। एंड इनका एज अमनदीप, इफ आई एम सेइंग इट करेक्टली, ही सेड कि जो इनका सीमेक वाला बिजनेस है कंसल्टेंसी का, इट इज हाईली कम्पिटिटिव एंड बहुत अनऑर्गेनाइज्ड भी है। तो इसमें इनका इशू है कि इतने कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इनने लास्ट 10 साल में तक कुछ नहीं करे, तो अभी क्या चेंज हो जो कर पाएंगे। फिर मर्जर बिटवीन रिलेटेड पार्टी, सो इन अराउंड FY19 they did a merger with Revathi equipments and Renaissance consultant. So again this merger was very complicated. So in FY20 12-13 Renaissance is also into project management type of business only. So what they thought ki Ingo's liability of torts they keep on mentioning, I still don't understand ki what do they mean by that, but I'm understanding कुछ agency issue आता है इनको, तो दे डिसाइडेड कि हमारे ऑलरेडी बैलेंस शीट में बहुत बोरिंग है, तो लेट्स सेपरेट दिस बिजनेस फ्रॉम रिवाती इक्विपमेंट्स करेंटली। सो दे सोल्ड दिस बिजनेस टू प्रमोटर्स ऑफ रिवाती इक्विपमेंट्स, तो अपने जो रिनाइसेंस के अभिषेक डालमा थी इनकी अलग दूसरी एंटिटी को इनने बेच दिया। एंड दे नाउ थिंक कि सिमाक एंड रिनाइसेंस कंसल्टेंट बहुत कंपीटिंग वेंचर बन रहे थे, तो इन व्यू फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे मर्ज दोस एंटिटीज रिसेंटली। बट स्टिल कोई भी रिलेटेड पार्टी का मर्जर होता है एंड दे हैव नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन कि कितना पैसा लगा है मर्जर का एंड ऑल सच थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली। स्टिल तो आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट रिलेटेड पार्टी का कोई भी मर्जर होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव डीलिंग हो सकती है, तो वन शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट। देन as I told you in FY10 they were willing to sell the drilling equipment business itself, कि they were getting good profits. So primarily I don't see them as good operators of business. इनको अगर अच्छा पैसा मिलेगा ना कल सिमेक का, तो उसको भी बेच देंगे। दे फोकस ऑन IRR वर्सेस मेकिंग बिजनेस ह्यूज एंड ग्रोइंग देयर प्रॉफिट्स। सो दैट इज वन मेजर रिस्क कि आगे आप ये नहीं सोच रहे कि चलो 15-20 साल तक ये कंसिस्टेंटली आपकी वेल्थ कंपाउंड करते रहेगा, कि अगर ऐसा बहुत डिमांड आई बिजनेस में और कोई अच्छा बायर मिले तो बिजनेस भी सेल कर देंगे। दो ही डजंट एक्सप्लिसिटली से दिस थिंग, बट इन FY10 वन हैज सीन कि he was ready to sell its drilling equipment business itself. So that is one major risk. I personally see them as investors first and operators later. So that is one risk कि this is not a consistent compounder story. अभी capex boom आ रहा है इसलिए इनका benefit आने का chance ज्यादा है. So that is what I meant by that. And they've several times changed their business plans. So as Amandeep Singh said कि ये लोग एक्सपोर्ट में इनका पास्ट में इनको पैसा लाने में प्रॉब्लम आया था, तो इनका ये 2-3 चीजों में काफी अच्छा लगी। पहले उन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन्हें एकदम से फॉरफिट कर दिया, अभी फिर से एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। फिर देयर इज वन वाटरशेड टाइप ऑफ इनका कुछ टेंडर बिजनेस आता है, वाटर वेल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो व्हाट डज इट कि दे कंप्लीटली फॉरफिटेड दैट बिजनेस लाइन बिकॉज उसमें रेवेन्यू काफी लंबी थे, टेंडर आएगा तो सेल्स आएगी। पर इनके जैसे ही FY18 में गंदे रेवेन्यू आने लग गए थे और FY15 में कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट में इतनी ग्रोथ नहीं आ रही थी, सिमेक वाज मेकिंग हेवी लॉसेस, सो दे डिसाइडेड कि हमको एंडिंग में शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना है, तो कहीं से भी आए तो चल जाएगा ऐसा। So they again started doing that water well contracts. एक साल बाद प्रॉफिट का बूम आया भी, that again in recent annual report they mentioned कि they don't do water well contracts because काफी लंबे रेवेन्यू आते हैं, इसमें मार्जिन अच्छे नहीं है। तो आपने पहले भी सेम बोला तब क्यों करा था? तब आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डिस्परेट थे रेवेन्यू के लिए, तभी आपने करा था। तो अपनी वो स्टेटमेंट काफी जो चेंज करते हैं ना एकदम से, आई डोंट लाइक दैट पार्ट। एंड इन कॉन्क्रीटिंग सोल्यूशन बिजनेस एज वेल, so if one is a new investor reading his annual report in FY10 and if will observe कि concreting solution business में क्या क्या है, so what he used to tell कि market में 3 major players है, actually 5 major players थे, उनका consolidation हो के 3 major players आ गए who control more than 70% market share। एंड अभी करंटली डाउन साइकिल में जा रही थी इंडस्ट्री, एकदम मार्जिन इसमें कुछ 2 या 3% आ रहे थे खाली। फिर जैसे हमने से कैपिटल रिटर्न अगर किसी ने बुक पढ़ी है तो उसमें
they mentioned कि if an industry goes through consolidation wherein the supply gets reduced, so ultimately the lower margins goes to a higher revenue, a higher margin profile. So what he was betting कि there is short term pain in this industry itself, but due to this consolidation, this business will go and margins will rebound to their mean level. But within 2 years, he sold that business. कि business में कुछ margins आ नहीं रहे, and he said very good quote कि एंडी में अगर आपके bargaining power is with the buyer, then आप कितने भी कम सप्लायर होगे ना, अगर आपका बायर बहुत बड़ा है ना, तो आप प्राइसिंग पावर नहीं रख पाओगे इसके सामने. So he sold that business, and ठीक है मार्जिन का मार्जिन, he should have sold that business, but why are you saying कि consolidation आ रहा है, margins बढ़ने वाले हैं, and then you suddenly sell that business before the rebound? So yeah, my investment thesis summarized. So he himself told about this in his annual report. I will just quote him कि prima facie our capital allocation seems to have been highly suboptimal till now. After paying off debt, capital invested mainly into CIMEC seems to have produced almost nothing in incremental market cap of Revathi. However, I am confident that a combination of business performance in years ahead and the demerger of subsequent listing of CIMEC over the next financial year should at least double the combined valuation of both businesses. So again, I'm not saying कि double कह रहे तो double हो जाएगा, but one can see कि इनके valuation में कुछ तो है लोचा कि आगे re-rating आ सकती है. So what is that? So as I said कि the business itself has thrown around 190 crores of cash between FY10 and FY22 after paying for losses, write-offs for construction equipment business, 100 crores which has been invested into CMAC and all such things. So incremental market cap ही नहीं है कुछ business में. So if I do a rough analysis, again, this is not a very high DCF वो सब मैंने नहीं करा, but basic analysis करने की try करी मैंने अगर, तो इनकी current valuation is 340 crores, wherein investments itself are 140 crores, wherein 120 is invested in CMAC and 20 crores is invested in real estate. So again, I'm not saying कि इनने CMAC में 120 crores invest करे तो 120 crore की market valuation आ जानी चाहिए, बट उसके कुछ तो आसपास आनी चाहिए ना. एंड आगे अगर वो बिजनेस प्रॉफिट टर्न अराउंड करने लग जाए तो उसकी वैल्यूएशन उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड पे नहीं होने वाली, उसके प्रॉफिट्स होने वाली है. सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि उन्हें कैपिटल इतना इन्वेस्ट करे तो मार्केट शुड गिव दैट वैल्यूएशन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज जोमेटो की वैल्यूएशन काफी हाई होती. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर बिजनेस में लोगों ने ऑलरेडी इतना पेन सफर कर लिया है, इतना पैसा डाल दिया एंड अभी इनको प्रॉफिट दिखने लग गए, तो देयर इज चांसेस कि सेपरेट एंटिटी के री रेटिंग हो जाए अगर प्रॉफिट्स ये लोग सेक्युलरली शो कर पाए. Then they have cash or treasury income of close to 50 crores. So 140 crores का investment, 50 crores का ये cash, and इनका 16 crores का profit before tax consistently which they have been generating in drilling equipment business. And इनके अभी revenue 10 साल बाद जाके इनका FY10 का revenue ये लोग अभी मैच करने लगे हैं. तो देयर हायर चांसेस कि जैसे अभी बैलेंस शीट क्लीन कर लिया है, अभी ये लोग अपनी P&L भी क्लीन करके उसके अपवर्ड ट्रेंड में जा सकते हैं. प्लस डीमर्जर जिससे वैल्यूएशन रीरेटिंग हो सकती है, एंड अभिषेक डालमिया टुकिंग कंट्रोल ऑफ CMAC as well. So that should lead to more focused and more importantly profitable growth. So that is my investment thesis summarized. So yeah, if I just have to show you a story in picture. So one will see कि इनका 2011 के टाइम पे 218 था. अगर आप FY10 का देखोगे तो इनका क्लोज टू 250 करोड़ का था. अब जाके 10 साल में इनका देखो आप FY16-17 में अगेन दे रिपोर्टेड गुड नंबर्स, बट उसके बाद 5 इयर्स में इन्हें खाली अपनी सेल्स डिग्रो करी है, बट इफ वन विल सी इनके प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है काफी. Despite degrowing their sales, their profitability have been improving, and these are not just one-time income. इनका ड्रिलिंग इक्विपमेंट में भी प्रॉफिट आने लग गया था, एंड सीमेक वाज आल्सो टर्निंग अराउंड बिकॉज इनके अपने काफी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कम मार्जिन वाले थे उन्हें वो एकदम छोड़ ही दे, कोई नहीं सेल्स कम करके हमको प्रॉफिट चाहिए. सो दिस पार्ट रियली इंटरेस्ट मी कि आफ्टर अभिषेक डालमिया टेकिंग MD CEO's रोल, इनके सेल्स कम करे, इनके प्रॉफिट्स में ज्यादा फोकस करा है वर्सेस देयर प्रीवियस ट्रेंड जो FY18 और इसके पहले भी विजिबल था काफी. सो दैट इज माय इन्वेस्टमेंट थीसिस समराइज. एंड इंटरेस्ट भी आप जैसे देखो कि इनने डेट क्लीन करा है, तो इनका पहले 13 करोड़ का आ रहा था, ये टेम्परेरी जो आपको 6 करोड़ 4 करोड़ दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू द शॉर्ट टर्म लोन दैट दे टुक बिकॉज ऑफ कोविड, कि दे हैड ऑलरेडी
made that equipment, उसका लोन ले चुके हैं, but they couldn't sell that equipment. तो उसकी वजह से वन ऑफ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया था इनका बैलेंस शीट एंड P&L में. So yeah, currently they are clocking close to the highest EPS, and I'm hopeful कि this FY23 they will do really well, which is visible कि FY22 में 181 crores का था and TTM is 271 crores, and because of their high order book I expect this year to be really good. So now again it remains to be seen कि जो कह रहे थे कि ये 200 crores का revenue book temporary नहीं, एक को regularly order आने वाले हैं, ये सच्ची था या नहीं था. So again one needs to keep tracking this business regularly, and अभी year end में आई है तो मालूम पड़ ही जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं. Excuse me. And yeah, and the fundamentals are aligning with the charts. Again, I am not a technical guy, but I can see कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है. लास्ट 5 साल में इतना पेन देखा है, रिवेन्यू कम कर रहे हैं, एंड अगेन आफ्टर क्लोज टू 10 ईयर ये जाके अपने वो पीक रिवेन्यू में पहुंचे हैं. एंड आप देख सकते हो कि सेम टाइम पे FY18 के टाइम से इनके जो प्रॉफिट से रिपोर्ट करने लगे थे, सेल्स डिग्रो करके ऐसे, एंड नाउ दे हैव रीच्ड देयर पीक लेवल्स. तो इट इज विजिबल इन चार्ट्स एज वेल. सो ओके, दिस वाज माय थीसिस. Great, Dhruv. So I see Avdut and Dhruv's hand. So Avdut, you can go ahead first. I've unmuted you. Hi, Dhruv. Good going so far. Just two questions. If you can elaborate the segment and the wise revenue for Revathi. I didn't get it, the CMAC and stuff. So, what are the 2 or 3 segments are there, and what's the revenue, what's the profitability? That's one. And second, if you can check vis-a-vis the last cycle. Okay, currently we are expecting the capex cycle, but what happened during 2002 to 2009, that cycle, if you can, 2004 to 2009, that would be comparable. I don't think in between whatever we are considering whether it is comparable or not. And third thing, third and the last thing, they have tried for delisting. Have you checked that details? No, I have checked the details from FY10 to FY22. No, I couldn't they find recently tried, Revathi Equipments tried for delisting in last year, and it failed. about that. Okay. You check the details, and one check you have done is find that they have been selling their or they are cleaning the assets or cleaning the company. Because of that, re-rating might happen. But the second thing is what we have to keep in mind. Most probably, I'm not saying it happens every time. Most probably, whenever the company is trying to release, there is a possibility that they know that the profits are coming. Same has happened in the last year for all cargo. Second example would have been the Vedanta. So you look into Right. those details. The companies know that they are going to be profitable in future, and that's why they go for this. Okay. So if you can clarify first 2 points. So yeah, their revenue profile in FY22, if I remember correctly, was 100 crores suppose was coming from drilling equipment business. So 80 crores was coming from CMEC. But again, the margins of CMEC are so low कि as he Amandeep Singh mentioned कि उसमें 20% margin they are making in drilling equipment business, and margin of CMEC have been very low historically. So they just turned profit of close to 2 crores if I remember correctly in FY22. So the sales figure is comparable in both these companies, but the profitability of drilling business is much more. So they are not comparable on that front. Whether there is a recurring part of revenue or profit revenue in that drilling equipment business. So again, if I Any remember idea on that? correctly, close to 40% was 40 crores was from operation and maintenance. But again, I am not sure about that. I will check and get back to you with that. And secondly, about delisting, I am not aware about that part. But if that is the case, and it only strengthens my investment thesis, right? Because the promoters themselves are also seeing value, and it is visible from their statement कि they are desperate कि हमने last 10 साल में 200 करोड़ का तो ये बैड डेट और ये सब इतना पे करा है, बट मार्केट हमको इतना सब क्लीन करने के बाद भी वैल्यूएशन वही 10 साल पुरानी दे रहे हैं 300 करोड़ की. That's okay. That's market has to decide whatever they have to Right. do. Yeah. And Dhruv, I think Amandeep has just mentioned on the chat, 20 to 30% of revenue comes from spares, which shall be recurring. Right. Okay. Okay. That's it from my side. Thank you. Thanks, Avdut. So Dhruv, I have unmuted you. You can ask.
Hi, Dhruv. Nice presentation. Thank you. So I wanted an update. Like, do you know, like, is the delisting going to, the demerger is going to happen, or like the record date has been announced, or how far is the process? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इनको क्रेडिटर का अप्रूवल मिल गया अभी कुछ अभी आया था एक्सचेंज में फाइलिंग क्रेडिटर Oh, के मीटिंग थी तो okay, शायद से हो गया था अप्रूवल okay. And what I assume is that this main entity is into the drilling and equipment business, whereas Silmac is more into consultancy for that mining thing. Correct? नॉट फॉर माइनिंग इट इज मोर ऑन आर्किटेक्चरल रियल एस्टेट एंड ऑल सच थिंग्स Okay, okay, okay. Got डिजाइन it. एंड वो सब चीजों में ज्यादा Okay, उसका एग्जैक्ट क्या कंसल्टेंसी है वो नहीं पता चल रहा है. दे हैव जस्ट मेंशन कि हमारी ये एआरडी इंडस्ट्री है व्हिच इज एग्री आर्किटेक्चरल डिजाइन एडीएनसी समथिंग दे मेंशन आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड कंसल्टेंसी इंडस्ट्री में भी कैटर बट Yeah. अगेन दे नॉट मेंशन थरोली कि इसमें क्या चीज का कंसल्टेंसी करते हैं एग्जैक्टली वो नहीं पता चला. Okay, good. So fair enough. The business has good potential. It has solid tailwinds. I'm not. Thanks for pointing out this particular company. I'm always on lookout for any such cyclical companies. So very bullish on the sector. And it will, like you just mentioned, Coal India is doing a lot of capex, and in fact, you should look at the policy document of mining which the government opened up. I think last year. I think, yeah, they came up with the. And so I just wanted to know, apart from Coal India, do they cater to other miners, or it's basically Coal India? basically the clients that they have mentioned is Coal India, Tata Steel. So these are the two primary people and Coal India से इनका major revenue आ रहा है because they have not mentioned ये Coal India से कितना revenue आ रहा है but इनका एक साल 40 से 64 करोड़ में आ गया था revenue because Coal India से कोई order नहीं आया था तो one can make कि इनका 60 to 70% revenue मे भी Coal India से आ रहा होगा तभी इतना revenue में downfall आ गया था Is there, Amanjit just by not mentioned getting that they have mentioned in the AR the top 10. I'll just have a look at it. But have you looked like the technicalities, whether the mining equipment is something that is secular across the mining industry, or it is something specific for coal or anything like that? सो व्हाट दे मेंशन कि हमारे ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहले हम खाली कोल इंडिया में फोकस कर रहे थे कोल में और स्टील में हाँ, हाँ. बट इसका एप्लीकेशन इज इन लाइमस्टोन ड्रिलिंग एज वेल Okay, सो आई एम great. अज्यूमिंग कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट सिमिलर Okay. हो गए तभी वो लाइमस्टोन में भी लग पा रहे होंगे So I'll look into that also. But the mining space has opened up by the government, and if they have the ability to, give it across, then it would be great. So that is a good trigger. And like you mentioned, the Selamac, the subsidiary is not yet, so it provides a good special situation play also for it. So that ways it's good. Thanks for the wonderful presentation. I'll connect you later on if I have something. श्योर थैंक यू And us, what I would say, Ankit, can we try and Yes. manage a management meet or something? Like, can we try and find out if we can connect? Then we can know further details about the company. Yeah. We can Yeah, so definitely. let's try because the space is very interesting. It's a proper like मैं जो पूरा space जो track कर रहा हूँ, this is a very interesting space to be. I have another company named Thijo Engineering. It is into the same space of mining, but it is into different equipment. You can have a look into that, and then from there you can correlate what sort of growth they can do. Great. No, we'll definitely try, and I think we have a few leads. Out from the AR, he's trying to make this like a holding company for himself because उसने वो every year post करता है that if you have any business which is 100 crores on things and you want to sell it off and everything. I think they want to make Revathi as a primary investment company also. So like something like सो Berkshire. FY10 में इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना उससे 40% रेवेन्यू आ रहा था तो पहले तो इनका एकदम वॉरेन बफेट वाला स्ट्रक्चर ही था एंड ही वाज विलिंग ड्रिलिंग बट उसके बाद से इनको रियलाइज हो कि कोर बिजनेस से पैसा लाना पड़ेगा आप रियल एस्टेट और ये सब में कितना डिपेंड रहोगे रेंट आ जाएगा आपका टेम्परेरी बट लॉन्ग टर्म गेम तो ये लोग लास्ट 10-15 ईयर से ये अपना इनका ही फर्स्ट लाइन हमेशा यही रहती है एक्विजिशन क्राइटेरिया इतना टर्नओवर हो वी डोंट वांट टू बी हॉस्टाइल टेक ओवर एंड ऑल सच थिंग्स कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ एज सच लास्ट 10 इयर्स में But yeah, let's see. अभी 50 करोड़ की कैश ट्रेजरी है तो Yeah. they must do some Right. CapEx. I'm Yeah, expecting that. Cool. Fair enough. Cool. Thanks. Thanks, Dhruv, for the questions. And Dhruv, I think the title slide was the image was not visible. So let's just introduce the company also, so that everyone is aware. Yeah.
या ये दिख नहीं रहा, मैं कोई इसमें से कर लूंगा. So again, let's start. Yeah, go ahead. So again, a question with you guys. We all know that electrification is a major mega trend in making. So this is a slide which I have taken from KEI Industries annual report, wherein they have mentioned कि growth बहुत आने वाली इस business में, primarily due to electrification के जिनके railway वाले जो plans है government के, rural areas में जो इनको करना है, construction में इनको जो करना है, then EV आ रही है, मतलब बहुत सब चीजों में इनका electrification का रोल काफी प्ले होने ही वाला है. एंड रोडवे, हाईवे, रेलवे, मेट्रो रेल पे, तो ये हर जो भी केबल कंपनीज देखोगे आप इलेक्ट्रिफिकेशन में है. एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि आगे ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग आने वाला है. तो आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस स्पेस की, बट थिंग दैट आई फाउंड कि मैं जो भी कंपनी में गया सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट सबके पी, अगेन पी इज नॉट अ वेरी गुड मेट्रिक फॉर वैल्यूएशन पर्पस, बट शॉर्ट हैंड अगर आपको देखना वैल्यूएशन कैसी है, सो सबकी 40-40 की पी तो थी. So I was like, maybe market is factoring their growth aspect in their valuations itself. So I wanted to look at their ancillaries. So, like, 1 second. So luckily again, I couldn't find any major information on that front from a screener by doing a particular screen कितना sales growth है वैसा कुछ है. So one thing that I normally do is I keep on looking for demerger cases or just looking for any company that is even mentioning the word demerger. So again, this was just a lucky coincidence. So I was just searching for demerger and I found this company. So this company is Ddev Plastic, which is Dave Plastic, but maybe due to some vastu reasons, they have kept two D in front. So what do? They are market leader in PE polymer compounds with a capacity of 239,000 MTPA. So again, this capacity number is a bit volatile. I will talk about this later. And basically exports contribute close to 30% of the sales, and wire and cables contribute close to 85% of the total revenue. But again, what is PE polymer? So and basically they have three primarily divisions. One is PE polymer, secondly is PVC, and third is other division wherein they do reprocessing and all such things. So primarily 50% of the revenue comes from PE business. 25% comes from PVC business and rest 25% from other business, which they don't explicitly mention कि others में क्या है, but I'm assuming कि reprocessing ही होगा. So ये जो PE और polymer ये सब के जो compound है, इनका primarily usage काफी सारी industries में है. As I just talked about wire and cables, but इसका usage is also in footwear industry and दो तीन और काफी इंडस्ट्री है जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हो गए, वो सब में भी ये पॉलीमर ये सब यूज होते हैं. ऑल्दो इनका 85% इससे आ रहा है, बट एज वी कैन सी कि फुटवेयर एंड ये सब में काफी ग्रोथ आ रही है. सो इन केस दे वेंचर इनटू दैट फ्रंट एज वेल, सो वहां पे ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है. अगेन दे हैव नॉट डन एनी मेजर स्टफ in that area currently, but let's see in future. So they got demerged in 2022 from 20 from Kalpana Industries. But the funny thing about this demerger was that this is no normal demerger. Ddev Plastiks contribute close to 90%, 97% of the total revenues of Kalpana Industries. Yet it was demerged into a separate entity. Why? I will talk about that later. So as one can see their historical progress in last 12 years. So again, they've been they have kept on developing new products, doing capex in different regions, which I will talk about later. So this slide is just for introduction. So again, the advantages. So while I was reading value picker threads, one interesting thing that just kept in my mind ki Ayush Mittal have mentioned ki whenever a small cap company is catering to very huge clients and still doing well, then one should take note of that company because उनकी या तो प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा होगी तभी इतनी बड़ी कंपनी थी छोटी कंपनी से पैसा ले रही है. एंड दिस कंपनी इज ओनली मार्केट कैप ऑफ 800 करोड़ जितना है. एंड येट इफ यू विल सी द क्लाइंटेल, तो एज माय प्रीवियस थीसिस वाज कि मेरे को इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड प्ले करना है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्क्रीन सो मेनी कंपनीज. पॉलीकैब है, केआई है, केईसी है, हेवेल्स है, कितने सारे प्लेयर्स हैं इंडिया में. कौन सा प्लेयर अच्छा है? अपार है, बहुत सारे प्लेयर्स है. तो आई थॉट कि कोई ऐसा एंसिलरी मिल जाए, अगेन फिनोलेक्स केबल विच इज वेरी वेल नोन, ऐसा कोई इनका प्लेयर मिल जाए सबको कैटर कर रहा है तो कितना अच्छा होगा. तो ये
Ddev Plastic caters to all these companies. RR Cables हो गया, Havels हो गया, KI हो गया. तो one knows कि एक मार्केट लीडर है, 30% मार्केट शेयर इनका, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी इनकी है एक तो इंडिया में. साथ में सबसे जो भी मेजर मेजर क्लाइंट्स है या प्लेयर्स है केबल के, सबको ये केटर कर रही है. एंड नॉट जस्ट इन इंडिया but in export market as well, which are there in below slides. So these are Indian players, these are export players. तो ये सब अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं. तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि इनका प्रोडक्ट में भी अच्छा होगा, तभी इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को केटर कर पा रहे हैं डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्मॉल कंपनी. So this thing attracted me towards the stock. Then second thing is again getting quick to the competitive advantage. So competitive advantage है क्या इनके? So basically this PE PVC business is very low margin business. So इनके peak margins ही लोग के 6% रह चुके हैं आज तक. Operating profit margin that I'm talking about. So one can imagine कि इनका 800 crores का market cap है, इनके profit margin खाली 6% operating profit margin that I'm talking about, not net profit margin. तो इनका revenue कितना होगा? तो you will be shocked to know कि इनका revenue is 2,200 crores in FY22. Excuse me. So इतने छोटी कंपनी के बाद भी इतना सेल्स कर रहे हैं, बट अगेन हमको तो प्रॉफिट सेल से क्या होगा. बट जस्ट टू हाईलाइट कि ये बहुत इसमें इतना कम मार्जिन है कि इसमें इकोनॉमिकल स्केल की नेसेसिटी बहुत ज्यादा है. तो अगेन दे हैव द हाईएस्ट कैपेसिटी इन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव दैट स्केल इकोनॉमीज. एंड सेकेंडरी इसमें कंपटीशन काफी आता है बाहर से, फॉरेन प्लेयर से. सो व्हाट दे डू इज दे डोंट cater to all type of cable manufacturers. So they only cater to low and medium voltage वाले सेगमेंट में, जिसमें ये मार्केट लीडर है. जैसे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स इफ यू विल रीड, तो दे कॉन्स्टेंटली मेंशन कि इसका एक मेजर रिस्क इज बाहर के जो मेजर प्लेयर जैसे डो केमिकल हो गया, ये सब प्लेयर इंडिया में एंटर हो रहे हैं, तो उससे बहुत कंपटीशन हो सकता है. बट द प्रॉब्लम विद दैट इज दे आर केटरिंग टू हाई वोल्टेज सेगमेंट एंड दे आर मार्केट लीडर्स इन लो एंड मीडियम वोल्टेज. आगे अगर वो लो और मीडियम में आ गए तो बहुत रिस्क है ऑब्वियसली. बट करेंटली आई डोंट सी फोरसी एनी मेजर रिस्क इन दैट सेगमेंट बिकॉज लो एंड मीडियम वोल्टेज की दे आर मार्केट लीडर्स. देन स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अगेन आई जस्ट मेंशन कि इनका 5 to 6% का खाली मार्जिन रह रहा है. बट द गुड थिंग अबाउट दैट इज इनके लास्ट 10 से 12 साल में ना ये मार्जिन, ये इनका 4 to 7% का जो मार्जिन का रेंज है. अगेन इट साउंड्स अ वेरी ह्यूज मार्जिन इज, बट एज आई विल टॉक अबाउट लेटर दे हैव बीन एबल टू मेंटेन दैट मार्जिन. 1% का मार्जिन चेंज आ रहा है एंड इतने बड़े रेवेन्यू प्रोफाइल में 1% का मार्जिन भी काफी अच्छा इंपैक्ट कर सकता है. बट स्टिल हैव शोड देयर कॉम्पिटेंसी की थोड़ा डिसेंट वे में मार्जिन मेंटेन कर पाए despite raw material की volatility. So how have they been able to do this? That is primarily due to strong inventory management. So what they do is they don't primarily they are from Kolkata only. They have one manufacturing facility in Kolkata itself or close to Kolkata in West Bengal. But what they observed is अगर हम coast के पास रहेंगे ना, because the polymer compound which they get as raw material, they get from oil companies like Reliance and ONGC and all such things. तो उनके पास रहोगे ना तो एक तो आप उनसे बार्गेनिंग तो कर नहीं सकते बिकॉज एज वी सॉ इन रिवाती वाले केस में, अगर आपका सप्लाई बहुत बड़ा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या मार्केट शेयर होगा क्या, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. बार्गेनिंग पावर विल बी विद द सप्लायर. सो इन्हें स्ट्रेटेजिकली रीलोकेट करा टू सुरंगी विच इज क्लोज टू ये रिलायंस का पोर्ट. दमन एंड मतलब ये दमन एंड दीव ऑल्सो मतलब कोस्ट में बेसिकली लोकेट कर रहे हैं खुद को. आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम एग्जैक्टली, बट ये ईस्ट और वेस्ट दोनों के कोस्ट में केटर करते हैं जिससे इनको इजीली माल मिल जाए और अगर एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट भी इजीली कर पाए. सो व्हाट दिस डज कि ये जल्दी जल्दी अगर इनको ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की नीड ही नहीं पड़ती बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सप्लायर. सो अगर आइडियली इनके कोई और प्लेयर जैसे कोई लिस्टेड प्लेयर है नहीं ऐसा जिसमें, मगर कोई और प्लेयर को ज्यादा टाइम लगता होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो इनको खाली इन्वेंट्री डेज हिस्टोरिकली हैज बीन क्लोज टू 40 to 50 डेज मैक्स. तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बीन एबल टू मेंटेन मार्जिन्स की इनका इन्वेंट्री में पैसे तो फंसता है नहीं. डिमांड आएगी, सामने इनका सप्लायर है पास में, तो इन्वेंट्री कम ये मेंटेन कर पाते हैं. तो उस चक्कर में ये लोग अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल भी मेंटेन कर पाते हैं, जिससे डिस्पाइट हैविंग वेरी लो मार्जिन्स दे हैव बीन एबल टू मेंटेन वेरी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो इनके लास्ट ईयर में क्लोज टू 22% का आरओसी आया था, विच इज अ गुड थिंग. सो अगेन एज आई टॉक्ड अबाउट इनका लोकेशनल एडवांटेज है कि कोस्ट में लोकेटेड है और रिलायंस रिसा के पास है, तो सस्ते में रॉ मटेरियल भी ले पा रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं चीपली. सेकेंडली स्केल ऑफ इकोनॉमीज आती है इनको. फिर स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट विच दे हैव शोन इन और एक नंबर्स में दिखता है ऐसे कि खाली क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स कहती है कि 20 to 40 डेज का इनका रह रहा है, बट आई हैव सीन कि इनका 50-60 डेज भी कभी कभार पहुंचा ऐसा. बट स्टिल बिकॉज ऑफ दैट इनका आरओसी काफी इंप्रूव रहा है क्योंकि ये लोग जल्दी जल्दी इन्वेंट्री टर्न अराउंड कर पा रहे हैं.
देन इनका R&D में एज है अगेन 2000 करोड़ का कोई टर्नओवर कर रहा है, तो अगेन बड़ी कंपनी तो है ही, दो मार्केट का छोटा दिखता है, प्रॉफिट्स कम दिखता है, बट इतना बड़ा टर्नओवर करना है दैट टू इन कंट्री लाइक इंडिया इज अ वेरी बिग फीट. सो व्हाट दे बीन डूइंग, अगर आप लास्ट 3 साल हटा दो तो दे बीन रेगुलरली इन्वेस्टिंग इन R&D, क्लोज टू 2 to 3 करोड़ का इनका हर साल R&D में रह रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बीन एबल टू ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स लाइक XLPE फॉर 132 kV वायर्स. अगेन दे हैव नॉट मेंशन कि इसका इंडस्ट्री साइज क्या है, ये सब इफ आई रिमेंबर करेक्टली दे समवेयर मेंशन कि $1.5 बिलियन की इंडस्ट्री है. एंड अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये लोग जो नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं इसकी वजह से आगे जाके इससे काफी रेवेन्यू अच्छा आ सकता है. सो इनका ये कि R&D में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज इनका स्केल इतना बड़ा है कि कर सकते हैं, बाकी प्लेयर इतना नहीं कर पाएगा. एंड अगेन डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग है, तो ये खाली पीवी पे डिपेंडेंट नहीं है, पीई पे डिपेंडेंट नहीं है, पी भी करते हैं, पीवीसी भी करते हैं, रिप्रोसेसिंग भी करते हैं. अभी इनका नई एक्सेल पी और ये सब जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, और ये सब की एप्लीकेशन काफी अलग अलग जगह पे है. फुटवेयर हो गया, केबल हो गया, ऑल्दो करंटली 85% केबल से ही आ रहा है विच इज अ रिस्क, बट केबल फुटवेयर एंड आगे काफी जगह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अगर चाहे तो. पाइप कंपाउंड हो गए, बहुत सब जगह पे इनका एप्लीकेशन है बेसिकली. So these are the competitive advantage or rather the good things about the business. But again the negative. तो जैसा ये सेड कि इनका मार्जिन खाली 5 to 6% रह रहा है, तो अगर आप मार्केट लीडर तो भी आपका मार्जिन 5 to 6% रह रहा है बिजनेस में, दैट टू ऑसिलेट होता है 5, कभी कभी 4% भी गया था, दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर. दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दिस डेव प्लास्टिक बिजनेस, बट अगेन इनका मार्जिन ऐसा थोड़ा वॉलेटाइल तो रहा है, ऑल्दो रेंज में वॉलेटाइल रहा है विच इज अ गुड थिंग, बट स्टिल अगर आप मार्केट लीडर हो, आपकी इतनी बड़ी स्केल है, तो इतने कम मार्जिन क्यों है? तो दिस स्पेस इज हाईली कॉम्पिटिटिव. एंड अभी से फॉरेन से कंपटीशन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डो केमिकल एंड ऑल सच कंपनीज, ऑल्दो करंटली दे आर केटरिंग टू हाई वोल्टेज सेगमेंट, बट आगे अगर कंपटीशन आया ये मीडियम एंड लो वोल्टेज में, तो इनको बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स है. सेकेंडली वॉलिटिलिटी इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल. सो मैंने ऐसे बोला रिलायंस से ये लोग लेते हैं HDP LDP एंड क्रूड डेरिवेटिव्स है बेसिकली, तो क्रूड के वेरिएशन से काफी इनको प्रॉब्लम आएगी. एंड इट इज नॉट कि क्रूड के वेरिएशन मतलब प्राइस बढ़ गया तो प्रॉब्लम आएगी, इट इज मोर की वॉलिटिलिटी पे प्रॉब्लम आएगी. आगे अगर आप प्राइस पास ऑन कर भी रहे हो, बट अगर आपका क्रूड इतना वॉलेटाइल हो रहा है कि आपको इन्वेंट्री थोड़ी बहुत मेंटेन करनी पड़ रही है ना. सो इनका एडवांटेज भी आता है कि इनकी इन्वेंट्री कम है, कि अगर मतलब बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आई भी क्रूड में, बट क्योंकि इनका इन्वेंट्री टाइम कम है तो इनकी इन्वेंट्री पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा मतलब वॉलिटिलिटी का, बट स्टिल दैट इज अ मेजर रिस्क. एंड ये इनका रिलायंस और ONGC से लेते हैं 70% ऑफ देयर ये जो भी रॉ मटेरियल है, तो बार्गेनिंग पावर इज विद देयर सप्लायर, तो दैट इज अ मेजर नेगेटिव ऑफ दिस बिजनेस. सेकेंडली रेवेन्यू ग्रोथ. तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे थी, अगर मेरे को तो मैं नहीं था थीसिस की प्योर केबल कंपनीज जैसे कोई कंपनी चाहिए मुझे, तो the bad thing is Inca revenue growth has not been able to match with pure cable companies. Although it has been close to that, but again it has not mirrored that. Why? Because cable companies के भी और अलग segments हैं. तो अगर cable segment कम grow हो रहा है तो उनके और दूसरे segment से भी they have been able to show growth, and they are primarily dependent into cable segment. तो वो जो प्योर पे केबल कंपनी जो मैं कह रहा था, उनका रेवेन्यू ग्रोथ भी ज्यादा रह चुका है एंड उनके मार्जिन डबल है. सपोज दे आर क्लॉकिंग 5% मार्जिन, तो आप हेवेल्स देखोगे, केआर केबल्स देखोगे, सबके मार्जिन आर क्लोज टू 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अगेन अगर उनका ROC 28% तक क्लॉक हो रहा है, इसका भी रिसेंटली जाके 22% क्लॉक होने लगा है, और उनकी सेल्स ग्रोथ भी डिसेंट आ रही है, तो ऑब्वियसली इनका डबल पी में भी जस्टिफाइड है. इसका जैसे अभी कुछ 17 का पी है, शायद से 16 या 17 का, और उनका 35-38 का पी है, तो देयर आर रीजंस बिहाइंड दैट. आई एम नॉट सेइंग कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, दीस आर द नेगेटिव. आई एम जस्ट टॉकिंग कि मैं कैसे ये स्टॉक के बारे में इंटरेस्टेड हुआ है, मैंने क्यों रिसर्च करनी स्टार्ट करी. सो टू गिव यू एन आइडिया कि आप क्या फ्रेमवर्क से न्यू थॉट्स ला सकते हो. अगेन आई एम वेरी न्यू इनटू दिस स्पेस, मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोगोगे, बट अगेन आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज वन वे व्हिच आई एम trying to find new idea. And I'm not just saying कि कंपनी बहुत अच्छी इन्वेस्ट कर लो, but the thought process behind smart sync is to develop new ideas and develop a community basically. So again, short term borrowings, although if you will see that long term borrowings are very negligible, but in case short term borrowings are huge because of, so these are four primary negatives. Again, poor corporate governance. So before I get into poor corporate governance, the major negative which we don't account for is insurance का. So what do I mean by that? So basically इनका FY 15 या 16 के टाइम पे they were doing a major capex of close to 200 crores कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, और इनकी वो 200,000 MTA की कैपेसिटी आने वाली थी सुरंगी में.
बट समथिंग हैपेंड, इनका कोई फायर का केस हुआ था जिसमें इनकी जो 150 करोड़ इनने कैपेसिटी में इन्वेस्ट करे थे, वो पूरी कैपेसिटी मतलब वो केप जो करा था केपेक्स पूरा जल गया। तो इनका 150 करोड़ का जो केपेक्स था, इनको वापस इंश्योरेंस कंपनी से खाली 100 करोड़ ही मिले। तो 800 करोड़ की कंपनी जिसका प्रॉफिटेबिलिटी साल का 25 करोड़ आ रहा है मैक्स अभी जाके, उनका उन्हें 2 साल में लगातार 25-25 करोड़ का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस रिपोर्ट करा था। एंड इफ यू विल सी द केपेक्स नंबर, तो ऑल्दो दे मेंशन कि हमारा 200,000 एमटीबी की कैपेसिटी अलग से आ रहा है, इनकी अभी जाके भी इनकी कैपेसिटी 239,000 एमटीबी दिखा रहे हैं। तो बीच की जो कैपेसिटी जल गई थी वो गई कहाँ पे? क्योंकि आपकी कह रहे थे कि आपकी पहले कोई कैपेसिटी थी और आपकी 2 लाख एमटीपी के अब ला रहे हो नई कैपेसिटी, तो नंबर्स डोंट मैच एज पर मी, एंड विच आई विल टॉक अबाउट लेटर एज वेल। सो या सो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा डीमर्जर मैंने पहली बार देखा कि आप 97% अपना बिजनेस दूसरी कंपनी में डाल रहे हो, जबकि आप नॉर्मली होता है कि कोई छोटा बिजनेस को सेपरेट करना है तब उसको अलग एंटिटी में डालते हो और 97% वाले पार्ट को इसमें रखते हो, तो इन्हें चेंज क्यों करा? तो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में इन्हें ऐसा लिखा था कि जो इनका रिप्रोसेसिंग वाला बिजनेस है उसमें ना बेसिकली इनको गवर्नमेंट के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, तो आप वो बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने जो इनका कंपाउंड बिजनेस था, पीई पीवीसी का कंपाउंड बिजनेस, वो इनने देव प्लास्टिक में डाल दिया। और रिप्रोसेसिंग वाला बिजनेस इज इन कल्पना इंडस्ट्रीज इवन नाउ। तो आई थॉट इट मेक सेंस कि लाइसेंस का कोई दिक्कत होगा। बट और मेरा फर्स्ट प्रीलिम मतलब जो भी स्टार्टिंग में मैं स्कैन करना स्टार्ट करता हूँ तो आई इमीडिएटली सर्च कि सपोज जो भी कंपनी है उसके आगे फ्रॉड या स्कैम ऐसा कुछ लिख दो, तो आपको इमीडिएटली आइडिया लग जाएगा कि इनका पहले कुछ पास्ट में टेंटेड रिकॉर्ड रह चुका है या कंपनी ने पास्ट में भी अच्छा गवर्नेंस दिखाया है। तो मैंने देव प्लास्टिक कैसे ही करा था, देव प्लास्टिक फ्रॉड। तो मुझे कोई केस नहीं दिखा था, आई वाज सेटिस्फाइड कि नहीं कंपनी अच्छी है, रिपोर्ट भी अच्छा कर रही है, मतलब टॉप लाइन ये सब, सो इट इज गुड। फिर मैं जैसे प्रेजेंटेशन बना रहा था मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि एक सेकंड, इनका देव प्लास्टिक का तो इनने जो भी रिपोर्ट करा है नंबर्स, वो खाली FY22 के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। उसके पहले तो सारे नंबर्स कल्पना इंडस्ट्रीज में थे। तो इमीडिएटली सर्च टाइम पास में कि कल्पना इंडस्ट्रीज फ्रॉड या स्कैम ऐसा कुछ भी लिख के देखो जैसे पास्ट कंपनी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आई फाउंड दिस। सो बेसिकली टू समराइज दिस कि इसमें है क्या, FY17 में बेसिकली सेबी फाउंड कि देयर आर क्लोज टू 330 शेल कंपनीज विच दे फाउंड। उसमें से काफी कंपनीज वर लिंक्ड विद कल्पना इंडस्ट्रीज। सो उन्होंने बहुत बड़ा केस फाइल कर दिया कल्पना इंडस्ट्रीज में कि शेल कंपनीज के थ्रू ये ऑपरेट कर रही है, इनके जो रिवेन्यू दिखा रहे हैं मे बी इतने हैं नहीं। फिर इनके बैलेंस शीट में ऐसा था कि इन्हें शॉर्ट टर्म एडवांसेस करे हुए थे टू गवर्नमेंट ऑफ क्लोज टू 50 करोड़। तो इनको था कि भाई 50 करोड़ गवर्नमेंट को क्या नीड है, तुम इतना एडवांस क्यों करो? तो इनको था कि नंबर पे शायद से इन्हें गलत रिपोर्ट करे ऐसे बैलेंस शीट मैच करने के लिए। ये काफी सारी चीजें थी। इनको था कि प्रमोटर का आप दिखा रहे हो कि 70% स्टेक है, पर जब प्रमोटर होल्डिंग आप दिखा रहे हो ना, तो मे बी जो मार्केट में फ्लोट है वो उतना है ही नहीं। प्रमोटर के जो रिलेटेड एंटिटीज उसने और ओनरशिप रखा है बिजनेस में, पर फ्लोट जिसके से कम हो गया मार्केट में। सो अगेन टू एक्सप्लेन सिंपल वर्ड्स में, सपोज मेरा मार्केट में 68% का प्रमोटर ओनरशिप मैं दिखा रहा हूँ थ्रू डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। बट मेरे कोई रिलेटिव्स है जिनको मैं रिपोर्ट नहीं करा एनुअल रिपोर्ट में कि मेरे एंटिटीज है। एंड इफ आई डोंट ऑल नो अबाउट दिस एंड ऑल, बट ऐसे कैप होता है कि कोई भी प्रमोटर अपनी लिस्टेड कंपनी में 75% से ज्यादा प्रमोटर ओनरशिप नहीं रख सकता, ताकि मार्केट में थोड़ा फ्लोट रहे और आराम से ट्रेडिंग हो पाए, कोई स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन ना हो पाए। तो इसका क्लोज टू 68% इतना स्टेक था ऐसे ऑलरेडी। तो सेबी क्या बोलती है कि आपके काफी सारे रिलेटेड एंटिटी है जो शेल कंपनीज है जो आपकी कंपनी में ओनरशिप रखते हैं, बट आपने उसका एनुअल रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं करा है। तो आप ये सब चीजें भी कर सकते हो। तो काफी सारे इनके अगेन केसेस आ गए थे सेबी के थ्रू। तो इनने से वो डिसीजन दिया था कि ये काफी मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे स्टॉक में, ऐसा मतलब प्रमोटर को बोला। फिर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आपको सपोज 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 200 रुपए का कैपिटल कमिट करना पड़ेगा, तो जस्ट टू डिमोटिवेट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। तो दे गेव एक्सप्लेनेशन कि भाई हमारे कोई ऐसा कुछ शेल कंपनी का डीलिंग नहीं है, ये जो एडवांसेस थे हमारी गवर्नमेंट को, ये हमारे TCS टैक्स जो भी एक्साइज ड्यूटी सब होते उसके एडवांसेस है, एंड दे क्लैरिफाई ऑल सच थिंग्स। फिर द ऑर्डर वाज रिवोक्ड एंड कंपनी वाज अगेन लिस्टेड प्रॉपर्ली। बट सेबी एकदम से इतनी छोटी कंपनी में इतना बड़ा केस ले रही, तो देयर माइट बी सम रीजन तभी इतना ले रही होगी। तो दैट कॉशन्ड मी कि मे बी एवरीथिंग इज नॉट सो रोजी। तो ये केस था। और देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स कि अच्छा तभी इनने मे बी इनका मतलब अगर आप सर्च करोगे कल्पना इंडस्ट्रीज का, तो आप सोचोगे अच्छा ये तो वही गंदी कंपनी जिसका इतना मतलब सेबी ने केस फाइल करा था। तो 97% अगर आप बिजनेस किसी और कंपनी में डाल दोगे जिसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, और खैर नंबर देख के तो अच्छा ही लग रहा है,
तो मे बी इनके जो वैल्यूएशन का जो री रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस माइट बी, अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, माइट बी हिंडरिंग द शेयर री रेटिंग, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, कंपनी न्यू आ जाएगी ना। तो मेरे को ये बहुत गलत केस लगा कि मे बी दिस वॉज द रीजन कि इन्हें डीमर्जर इसलिए करा था कि ये पास्ट इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो चला जाए। एंड आई नॉट सेइंग कि इससे पैसा नहीं बन सकता। इफ वन इज ट्रैकिंग मेक मनी ऑर्गेनिक्स तो वन विल नो कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने भी सिमिलर कुछ गंदा टैक्टिक करा था कि अपना खुद का प्रमोटर का ओनरशिप बिना कुछ पैसे लगाए उन्हें सपोज 65% है तो 70% कर दिया था थ्रू मर्जर ऑफ प्रमोटर कंपनीज एज वेल एज जो लिस्टेड कंपनी थी। एंड देन उसका डीमर्जर कर दिया जिसमें प्रमोटर की स्टेक बढ़ गई थी। तो मार्केट में काफी से बोल रहे थे कि इन्हें गलत एंटिटी करा है, मतलब अपना बिना पैसा दिए कैसे प्रमोटर का स्टेक बढ़ गया। बट अगेन दूसरी कंपनी में डाला था तो मे बी उसका जो बैगेज था मेक मनी ऑर्गेनिक्स का वो मेक मनी फाइन के तक गया ही नहीं। एंड स्टॉक हैज डन वेरी गुड। आई एम उसका कुछ 500% तो रिटर्न है लास्ट 1 या 2 ईयर में। अगेन आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक, दिस इज जस्ट अ केस स्टडी कि आई एम नॉट सेइंग कि इसके ऐसे पैसा नहीं बन सकता। But if one is looking for a consistent compounder story, which I generally look for, then one should be wary of this fact, which I previously missed because I was searching for Ddev Plastiks related news. But this news was covered under Kalpana Industries. So again, this is a very good case study which everyone can follow. कि जो पास्ट कमी थी उसका भी आप ट्रैक रिकॉर्ड सर्च करके देखो कि एनुअल रिपोर्ट में सब रोजी रोजी दिखता है, असल में क्या प्रॉब्लम है वो इस सब में दिखता है सब। other small issues which I found कि जनरली ये कंपनीज एक्ट सेज कि आपको डेप्रिसिएशन देना है कोई इक्विपमेंट में या अपनी मशीन में तो आपको 15 इयर्स यूज करना चाहिए, बट दे यूज 25 ईयर्स एज डेप्रिसिएशन पीरियड। तो इसकी वजह से इनका डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होगा वो काफी कम हो जाएगा कंपेरेटिवली। अगेन आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट कि कितना डेप्रिसिएशन का लगता है ऐसे, बट ये थोड़ा मेरे को नेगेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस लगी इनकी तरफ से। ऑल्दो से कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बट स्टिल वन शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट। फिर सेकेंडली इनके ऑल्दो लॉन्ग टर्म बॉडीज आराम से बोरो कर सकते हैं ऐसे, मतलब किसी से भी, बट स्टिल ये लोग ने ना अपने प्रमोटर एंटिटी से 20 करोड़ की बोरिंग करी हुई है। एंड सेकेंडली कि अपनी डिस्पाइट बीइंग सच अ ह्यूज कंपनी दे स्टिल पे रेंट ऑफ क्लोज टू 1 करोड़ टू द रिलेटेड पार्टी। सो थर्ड इज द क्यूरियस केस ऑफ केपेक्स। सो दैट सेट ने पहले 200,000 एमटीपीए का केपेक्स करा हुआ था। Then again, in their Q1 FY23 investor presentation, they mentioned कि they have the largest capacity of 2,85,000 MTPA. But in Q2 FY23, they have reduced their capacity to 2,39,000. तो चक्कर क्या आप सेल कर रहे हो, आप अपनी रैशनलाइज कर रहे हो कैपेसिटी, क्या है ढंग से इन्हें मेंशन ही नहीं करा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि पैसा जा कर है कहाँ आ रहा है, क्योंकि काफी वे में आप इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे FY22 में दे मेंशन कि AR में मेंशन कि हमारा 2,61,000 का है। Q1 FY23 में दे मेंशन कि 2,85,000 है। Q2 में मेंशन कि 2,39,000 है। तो व्हाट शुड बी, मतलब क्या इसका इंटरप्रिटेशन निकाले? क्या आपने आपको बिजनेस में डिमांड नहीं आ रही है, आप कुछ कैपेसिटी रैशनलाइज कर रहे हो कि बंगाल का प्लान सुरंगी में ला रहे हो, क्या है? मतलब इतने ढंग से वो मेंशन नहीं कर रहा है। 2,91,000 इनफैक्ट। सो मेरे को ये भी बहुत गंदा पड़ रहा है कि ढंग से कम्युनिकेशन ही नहीं कर रही है इन्वेस्टर्स के साथ। सो ये थोड़े स्मॉल इश्यूज थे। एंड एज आई मेंशन में इंश्योरेंस क्लेम वाला इशू 50 करोड़ का इनका तो लॉस हो गया था खाली इंश्योरेंस में। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप 150 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लो, बट ये मेरे को इसमें देख के मालूम पड़ा कि ऐसा भी रिस्क होता है मतलब लिस्टेड एंटिटी में कि अगर कोई जल गई तो इतना आप इतना बड़ा केपेक्स कर लेते हो क्या पूरा इंश्योरेंस से कवर ही नहीं कर पाते, तो आपको उससे इतना लॉस हो सकता है सर। एंड अगेन मैनेजमेंट, तो वन गुड थिंग विद द मैनेजमेंट इज ऑल्दो नरेंद्र सुराना who has been the promoter and spearhead of this business since last 2 to 3 decades, उनका बेटा भी बिजनेस में आ गया अभी जो भी 30-31 ईयर्स के आई गेस। तो सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से दिस इज अ गुड स्टेप। एंड इफ वन वी लुक एट फाइनेंशियल्स तो अगेन इनका लास्ट 1 साल में फाइनेंशियल काफी ग्रो हुए हैं। एंड अगर आप इनके देखोगे आरओई एंड आरओसी नंबर्स, तो अगर आप स्क्रीनर में जाओगे ना तो इनका इन्फॉर्मेशन ढंग से मेंशन नहीं करा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका 97% बिजनेस देव प्लास्टिक में चला गया, तो इनके जो भी नंबर्स थे वो सारे हिल गए। तो वाई आई रिपीटेडली सेइंग कि स्क्रीनर से आपको ये सब कंपनी नहीं मिल सकती। आई एम नॉट सेइंग स्क्रीनर इज रॉन्ग, बट क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल जो थे आधे दूसरी कंपनी में चले गए तो अगेन आपका रिवेन्यू कम हो जाएगा, तो आपका जो 10 ईयर केगर था वो आपका नंबर ही बिगड़ जाएगा। तो डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेल इन द पास्ट 10 ईयर्स इनका मार्जिन भी स्टेबल रहा है, वो स्क्रीनर के क्राइटेरिया में आएगा ही नहीं ड्यू टू सम अकाउंटिंग इश्यूज। सो दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली इनका जो
कल्पना इंडस्ट्रीज था उसका लोएस्ट टू लोएस्ट प्रॉफिट मार्जिन इनका 4% गया था बिफोर डीमर्जर इटसेल्फ इसका कुछ 4.5 या 5% इतना ही था मार्जिन। पर जैसे ये अलग हुई ना एंटिटी तो इनके मार्जिन 6% रिपोर्ट होने लग गए। तो उससे मेरे को समझ में आ गया इनका जो रीप्रोसेसिंग बिजनेस है जो अभी लिस्ट हो चुका है सेपरेटली, इट इज रिपोर्टिंग लॉसेस रिसेंटली, ऑल्दो उसका भी रेवेन्यू लाइन में ग्रोथ आ रहा है बट इट इज रिपोर्टिंग लॉसेस। तो उससे मैं समझ गया कि मे बी बिकॉज ऑफ दैट उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे वो उसके लॉसेस के चक्कर में ओवरऑल एंटिटी के प्रॉफिट मार्जिन कम दिख रहे थे। बट स्टैंडअलोन एंटिटी जो था देव प्लास्टिक का, इट इज रिपोर्टिंग 6% मार्जिन। सो दैट इज अ गुड थिंग, ये कंसिस्टेंटली 5 से 6% मार्जिन मेंटेन करे। फिर इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20% का आ रहा है, आर ओ इज 15 to 16% एंड आर ओ सी इज 24%। तो 20% से कुछ भी 15% से अबव है तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी कि 15% से अब जा रहे हैं तो दे आर एबल टू कवर देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली ऑफ 10%। आई एम जैसे बॉल पार्क फिगर बट अगेन दैट इज अ गुड थिंग। So ROCs have started to improve. So again, I'm suspecting कि maybe because they have rationalized this capacity, कि अभी ऐसे इन्हें एकदम से बढ़ा के कम कर दी, तो because of that maybe ROA बड़ा दिख रहा है या इन्हें बड़ा कर लिया because डिमांड कम थी या क्या थी। अगेन बहुत स्मॉल के कंपनी को इनका कॉल नहीं आता, इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में रिसेंटली आए थे इन्फॉर्मेशन, तो इसकी काफी सारे इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। पर सिंस मैंने आरओए में इतना जंप देखा एकदम से, तो मेरे हिसाब से इसके चक्कर में कहीं आया है फर्क। एंड अगेन आरओ मतलब रेवेन्यू ये सब अच्छा आ रहा है और हमने देखा है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ तो आ रहा है। एंड अगेन अगर आप इनकी वैल्यूएशन देखोगे तो इनका मार्केट कैप इज करेंटली क्लोज टू 800 करोड़। एंड अगर आप ईवी टू एबिटा करोगे तो इनका अराउंड 8 टाइम्स आ रहा है टीटीएम मतलब ईवी टू एबिटा। सो अगेन इट इज नॉट वेरी चीप बट इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। सो अगेन दैट वाज माय थीसिस अराउंड दिस। वी कैन हैव द क्वेश्चंस नाउ। अंकित जी। Like Ddev Plastiks has not been covered by any of our audience yet, but very good presentation, bro. थैंक यू। So, anyone has any question, you can raise your hand or maybe type in your question if you can't raise your hand. We टाइम are पे भी happy to कंप्लीट हो take. गई मेन। Huh? टाइम पे भी कंप्लीट हो गई प्रेजेंटेशन में तो खींचा नहीं था। So, Amandeep is asking about capex plans. Do they have any capex plans, Dhruv? They have not mentioned anything as such. That is the problem with this company. इनके डिस्क्लोजर इतने पुअर है कि इनका क्वार्टरली इतना मतलब जो कैपेसिटी है, केपेक्स तो छोड़ो, कैपेसिटी इतनी फ्लक्चुएट हो रही है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि ये इनका पहले ने ट्राई करा था कि इनका जो वेस्ट बंगाल का जो प्लांट था दे वर ब्रिंगिंग इट टू सुरंगी विच इज क्लोज टू रिलायंस प्लांट इन मुंबई। तो ये लोग वेस्ट कोस्ट में ला रहे थे। तो आई एम assuming कि maybe they are again rationalizing that capacity because in the recent investor presentation one can see कि इनका जो सुरंगी प्लांट है उसकी कैपेसिटी थोड़ी बड़ी है। तो आई एम थिंकिंग मे बी वो लोग उधर की कैपेसिटी इधर ला रहे हैं इसलिए इधर फ्लक्चुएशन आ रहा है। बट अगेन इनके साइड से कोई रिपोर्टिंग नहीं आई इस चीज में। So, before Marik, you have raised your hand. I've unmuted you. If you have any question, you can go ahead. हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मेरा दो तीन मतलब कंपनीज के साथ ये देव प्लास्टिक को मैं कंपैरिजन करूंगा। जैसे कि Okay. ये फॉक्सकॉन या फिर डिक्सन जो है वो लोग भी बहुत लो मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन में वो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, मगर वो लोग इतना सारा कंपनीज मतलब इतना सारा रेवेन्यू जनरेट करता है तो उससे मतलब वो लोग सस्टेन कर पाते हैं। तो ये भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ही एक कंपनी है। और एक कंपनी है बीपीएल और इनियोस, ये लोग भी वो पॉलीमर सेगमेंट में है। तो इन लोग का जो रेवेन्यू है वो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा क्रूड प्राइस के साथ थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। तो ये देव प्लास्टिक को भी क्या उस कैटेगरी में डाल सकते हैं? क्रूड का कुछ अगर फ्लक्चुएशंस होगा, वॉलेटाइल होगा क्रूड प्राइसेस में, तो इन लोग का मार्जिन में भी कुछ प्रेशर आ सकता है, ऐसा कुछ। या तो हिस्टोरिकली इनका यही हुआ है, इनका अगर ऑयल में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस बढ़ गया या घट गया है, वॉलेटिलिटी आ रही है ना एकदम से, तो दे हैव बीन अनेबल टू पास ऑन द प्राइस हाइक। तो इनके मार्जिन स्टिल व्हाट आई एम सेइंग कि डिस्पाइट दिस फ्लक्चुएशन बिकॉज ऑफ देयर इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम दे हैव बीन एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स इन अ पर्टिकुलर रेंज। बट अगेन अगर ऐसे वॉलेटिलिटी आ गए तो इट विल गो इनटू लोअर रेंज वाला।
but range में रह रहा है. The point is that ऐसा. So yeah, again, you can classify it as Dixon because they again cater to several companies in that they cater to several companies as well as they have low margin, high turnover types of business. So yeah, I can fit that into that bucket. Anubhav, any other question you have? Okay. No, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thanks. Thanks. So, Pritish, I've unmuted you. You may go ahead with your question. Yeah. Thank you, Ankit bhai. I mean, basically, I am from the same field, polymer field से हूँ मैं, and just to have one input, इनका जो product है, that is somewhat similar to Kingfa. You can correlate this company with the Kingfa, who are also into same compounding products. तो वो लोग भी कंपाउंड प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं बट एज यू आर मेंशनिंग कि इसका काफी इंपोर्ट से भी कंपटीशन है सो यू आर राइट क्योंकि किंगफा इज अ चाइनीज प्लेयर and they are establishing they have established their plant in Pune as well as I think Chennai में भी वो कुछ कर रहे हैं so they are doing on a larger scale. Coming back to the previous Anubhav question, उस पे क्या था BEPL that is Bansali Engineering Polymers and INEOS. So these two are polymer manufacturer. They have got their own petrochemical plants. और ये जो कंपनी है आई मीन अर्लियर विच वाज के कल्पना एंड लेट्स से किंगफा these are the consumer of this polymer तो वो कंपाउंड करते हैं वो इट्स लाइक एडिशन प्रोसेस है ये तो कंपनीज लाइक बंसाली इंजीनियरिंग और इनियोस के प्राइजेस है उनका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी आप देखना हिस्ट्री उठा के वो मोरलेस इट्स प्योरली कमोडिटी पॉलीमर मैन्युफैक्चर नंबर वन बट उनका लास्ट 2-3 साल से बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई की वजह से है ना ओवरऑल ग्लोबली उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज मेनली इनटू स्टायरेनिक्स पॉलीमर्स तो वहां पे काफी डेल्टा बढ़ गया था बिटवीन स्टायरीन मोनोमर एज वेल एज पॉलीस्टायरीन बोथ दे मेक आइदर पॉलीस्टायरीन और एबीएस पॉलीमर तो उसकी वजह से वो डेल्टा मार्जिन काफी बढ़ गया था तो दैट वाज द रीजन कि उसमें लास्ट 2 साल में एकदम से नेट प्रॉफिट इतने बढ़ गए मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन काफी रिवाइव हो चुके थे बट नाउ अगेन दैट मार्केट इज आल्सो स्टेबलाइजिंग और उसके वही जो एवरेज मीन एवरेज है अराउंड 6-7% 10% वहां पे वो अभी आई मीन दे आर लैंडिंग अप इन दैट region only. One more thing, see these products are directly related to crude. Yes, they are. But again, उनका raw material finished product जो है, I mean basic monomer as well as polymer में वो delta पे ज़्यादा difference करता है. Not straight away related to the crude, because it also depends on the exchange rate also because their polymer, their monomer, their material is totally imported. Nobody makes in India. Especially for these two companies, that is Bantali Engineering and INEOS. I mean, again, now INEOS is also taken over by the, local, I mean, domestic player only, which was the initiator of this ABS business. If you know the ABS Limited company, long back. So again, the name is changed to Styrenics Performance Polymers now. And yeah, one more player is there in that, that is Supreme Petrochemical. So they also make the same products. And regarding again, sorry, I was just talking about different polymers. That But was very coming back, insightful actually. yeah, I yeah, didn't know कि compound मतलब exactly ऐसा होता है कि इसके ऊपर addition करते हैं सर. हाँ Very सो insightful. इन लोगों का जो मेजर जो है ना वो क्या होता है कि कंपाउंड प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है सी एज यू राइटली मेंशन कि ये वॉल्यूम का ही गेम है ऑपरेटिंग मार्जिन कम रहता है बट अगेन डिफरेंट ऑन द वेरियस एडिटिव्स वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं फ्लेम रिटार्डेंट प्रोडक्ट बनाते हैं कई जगह पे होता है ग्लास फाइबर वो यूज करते हैं
so which are also again imported products. तो उस पे भी काफी वोलेटिलिटी रहता है उसके एंड ऑपरेटिंग मार्जिन पे. So वो एक I mean there was little input from my side. Yeah, that's it. Thank you so much. Thanks, Pritesh ji. Thank you Yeah. for your insights. Yeah. Thank you. So, Dhruv, I think you can stop sharing so that I can share my screen and just take 5 minutes. Thanks, Dhruv. So I hope my screen is visible, right? Okay, great. So just last 5 minutes, we recently had our first uh, physical meet in Bangalore, and we would like to continue with this, as we always believe in this policy of consistency more than intensity. So we'll be consistently having these events at different cities all around the country. So we have started with Bangalore because Bangalore is where we are having a presence. But we'll soon visit cities like Mumbai, Pune, Delhi, Hyderabad, and we'll request all our Mission Smile members and also people who are not yet members but know us to help us arrange those events so that we all can learn. And with this, we come to the end of the presentation. You can see a few of the images of the event we had recently. These were the responses of some of the participants who were part of that. And now I'll just ask Meet Bhai to say a few words, because Meet Bhai has just joined us. Today, 5 new members have joined Mission Smile during the course of this presentation. And I would like to thank all of them and would just unmute Meet Bhai's mic and ask him to say a few words before we end the presentation. Yeah, Meet Bhai, I've unmuted you. You may go ahead. Hi, Ankit bhai. How are you? Good. Yeah. Okay. Amazing content yet again, Ankit bhai. It's so satisfying to hear young guns like Dhruv bhai firing from all cylinders. I met him few times. He's from Surat, so an amazing talent you recruited, I must say. So just subscribe to your discounted offer. So keep shining, keep rising, keep the torch of compounding high. Cheers. You guys are really doing well. Thank you so much, Vidbhai. And community only grows with its members. So we are happy to keep getting new members and valuable members like you. And uh, we are always open for any suggestion, any feedback. We keep exploring and experimenting based on what feedback we get from our members. So I would again request everyone and people who are not members yet and have attended today's webinar. The only request is, if you find the webinar of some value, please spread the word. Let others also know about it. And we'll, in a day or two, we'll also put the recording on our YouTube channel so that anyone can watch and learn from it. With this, we come to the end of the presentation. Thank you so much, everyone. Have a good holiday with your family. Thank you. Just a second. I see Atulji raising his hand. Please go ahead, Atulji. You wanted to say something? I'll just unmute you. Yeah, please go ahead. Sorry, I missed that. I just saw it. Ankit ji, very nice to see very young people going so deep. Congrats, Dhruv. It was a real good presentation. One thing I would suggest is that whatever questions on a particular company that gets generated, we can have a summary of all those doubts and questions where we need clarification, and maybe through the platform we can send it to the company for them to clarify, and that can be provided to all, so that yes, certain assumptions can be clarified. That would be a good part. So then based on that, somebody can take a decision whether to go for it or not. That was my suggestion, but real good one. Thank you. That's a very good suggestion, Atul sir. And
Coincidentally, for both these companies, we have a few leads to reach out to the management, and we'll definitely reach out to them. And just before, good that Atulji asked this question. Just before we leave, just want to make this disclaimer. I forgot to put the disclosure at the start. I and my company has no holding in this in these two businesses, and it was not a recommendation to buy or sell these stocks. Please take it as a educational event, and take the help of a registered investment advisor before having any position in any companies like this. With this, thank you so much, Atulji, for your suggestion. We'll definitely make a list of all the questions and approach the management soon. Thank you all, and have a good holiday. Bye.